A very good evening to all my dear students. So welcome to today's section for chapter number 12 of auditing and assurance subject. So chapter number 12 is audit of banks, and we have got two sessions for this chapter. And as we have done the various last chapters in detail, Hana, and we have understood the practical aspects also. So in this chapter also, we'll be going through the module as well as we will be discussing various practical aspects related to audit of banks. Okay? So I can see a number of you have already joined. So good evening, Banreddy, Hitesh, Nilabjo, Siddharth, Simran, Pooja, Meghna, Khushi, Annie, Anushka, Siddhant, Krishnan, Himanshu. Very good evening to all of you. And Nilabjo, your query relating to chapter number 10, I'll take up at the end of the session. Okay? So with a very positive note, let us start with chapter number 12, which is audit of banks. Okay? So as I always tell you that when we have to understand any concept, we first need to understand, we should try to break it into parts, and then we should try to understand what is it talking about. So audit of banks, when we are discussing chapter number 10, so by so far, what is audit, you all know. Okay? And here, the entity with respect to which we'll be discussing about various auditing aspects is the banking companies, the banks. Okay? So we'll be discussing about the various asset side items of a bank, the various liabilities, the items of liability side of balance sheet of a bank, then the income side and the expenditure side, and what all are the responsibilities of the auditor when he's conducting an audit with respect to the bank. What will be the audit approach? What will be the significant areas where the auditor will be concentrating with respect to audit of banks? Okay? Now, students, tell me, whatever you have done so far, like you saw in chapter number 1 with respect to the audit engagement, Hana, quality control, SC 210220, then risk, assessing the risk of material misstatement, right? By way of SC 315, whereby it is what? Identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. Then SC 300, right, related to planning of audit. 320 relating to materiality, then 500 series related to what? The audit evidence. Tell me, with respect to audit of banks, will all these audit procedures and all the auditing aspects that you have done so far, whether those will be applicable or not? Or let me just tell you that till chapter number 8, whatever you have done, whether that will apply to banks or not. If you are going to conduct the audit of banks, whether you will be finding out materiality by applying SC 320, whether you will be doing the audit planning by applying SC 300, right? Whether you will be identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment in terms of SC 315. Quickly send in your replies. So Himanshu and Archana are saying, yes, we will definitely do that. Okay? So students, in this chapter, you will see that a number of things that you have already covered is also been dealt in with respect to banks. Okay? So I'll try to take all those matters in a very quick fashion in the next session. Okay? So abhi ke liye, whatever are the new aspects related to audit of banks, I'll be taking all those aspects in detail. Okay? So Sarthik is also saying, ma'am, definitely it will apply. Anushka, Hitesh, Meghna, Khushi, Rahul, Smitha, and Annie. So absolutely correct, it will apply. Okay? So now we are conducting the audit of banks. So let us first talk about the financial statement of banks for which we are going to conduct the audit. Okay? So the form and content of financial statements of the banking company are to be maintained in as per subsection 1 and subsection 2 of section 29 of the Banking Regulation Act 1949. Okay? So section 29, subsection 1 and 2
of what Banking Regulation Act 1949 deals with the form and content of financial statements of the banking company. Okay? So see, when I'm telling you that we are discussing, we are discussing about the aspects which are very much peculiar to a banking company when we are conducting the audit, and that you have not covered so far in till chapter number 8. So let us first see how the financial statements of a bank are maintained. So, subsection 1 and 2 of section 29 of the Banking Regulation Act 1949 deals with the form and content of financial statement, whereby it says that every banking company should prepare the balance sheet. And what is the format? It is in Form A of third schedule to the Banking Regulation Act 1949. And with respect to the P&L account, it is Form B of third schedule to the Banking Regulation Act 1949, right? Further, the banking companies are required to comply with the disclosure requirements under various accounting standards. Okay? So we will do one thing. We will just have a very quick look at a balance sheet of a bank, which I have downloaded from the public portal. So you can also download, you can also Google them, and these are easily available. Okay? So this is the balance sheet, Hannah. Just, I'm not able to write here, but you can just have a look at the balance sheet. Okay? Then these are the various schedules, and my concentration and your concentration should be more on schedule number 9, which is advances. So today we are going to discuss advances in detail. Okay? But before that, let me just ask you a question. Quickly tell me, what according to you will be a major component on the liability side of a banking company? Liability side में आपको क्या लगता है most important component क्या हो सकता है with respect to a banking company? So see, what is the function of a bank? A bank, it accepts the deposits from the public, and it makes available those funds to those who are in requirement of funds. That is, it lends. Lending function is there with respect to bank. Further, out of these deposits, the bank also makes some investments. Okay? So absolutely correct. Deposits. So since these are the monies which the bank has taken from the public, which the bank needs to return to the public, so these are what the liabilities, Hannah, and these are what the advances, the loans that the bank has made to the public, and these are going to come back to the bank. So these are what the assets of the bank, and these investments out of the deposits, these are also the assets. Now students, tell me, with respect to the deposit, what is going to be the corresponding figure in the P&L account? On the deposits, the bank will have to incur a dash expense. What will be that expense? Quickly tell me. So the bank will be paying interest, right? So this interest expense is also going to be a major expense item. Okay? Further, with respect to advances also, the interest income will constitute a major component of the income side with respect to a bank. Correct? Quickly send in your replies. So students are saying that in the morning session in advanced accounting, they have learned about accounting of banking companies. So see, that is your knowledge that you have gained in the first session, in the morning session, this is going to help you a lot in understanding auditing also with respect to audit of banks. Okay? So I told you that one of the major items in the liability side is what? Deposits, and advances becomes another major item of what? The asset side. So today my focus will be on discussing each and every aspect about the advances of which constitutes a major item of a
banking company's balance sheet. ठीक है? So students, there are a number of topics which are given before the topic advances in your module. So those are very general topics, like what are the types of bank, what all regulations are applicable to a bank, है ना? Who can be appointed as the auditor of a bank, what all kind of audit report the auditor of a bank need to issue. So all those topics I'll be taking quickly in the next session, because those are general topics. So I'll request you that before coming for the next session, you please go through all those topics at home. And in case of any query, we can always take up all those queries when we'll be discussing those topics. Like I'll be discussing the selected topics, which are not very general or which need certain explanation. So I'll be taking those topics in detail in the next session. So abhi I'm starting with advances, which is given on page number 12.21 of your module. So quickly tell me, is it clear so far? So with respect to advances, now my next query to all of you, tell me, what is the second or what synonym comes to your mind when with respect to advances? The other name for advances. Quickly send in your replies. So all of you have answered correctly with respect to my earlier questions, that interest income will be there and interest expense will be there. Okay? Now, advances. Other name for advances is what? So loans. Absolutely correct. Okay? So देखो, what is the purpose? Why the bank is there? Because it have deposits from the public, है ना, जिसके पास सरप्लस फंड्स हैं, वो डिपॉजिट कर देता है बैंक में. बैंक उन फंड्स को, it lends those funds to all those persons who need the money. ठीक है? And that money is paid to the borrower on with an agreement that such person will repay that money. है ना? ऐसे थोड़ी ना होता है कभी के लिए भी ले लो, है ना? ऐसे थोड़ा ना होता है कि मत देना ये पैसे, repayment तो होता ही है ना. Further, as a compensation of that borrowing, that borrower needs to pay what? Interest amount. So this interest becomes income for the bank, and the advances become the assets for the bank. इतना तो clear है, simple है, ठीक है? So what are advances? Advances are amount of money or credit given as a loan from bank to another party with an agreement that money will be repaid. Simple, है ना? And interest is charged as a compensation for that borrowing. Simple hai. Now, quickly send me few examples of advances. Examples of advances. Imagine yourself as, let's say, a manager of a bank. है ना? Now tell me, what all advances can be there? So Hitesh has answered that term loan, which is absolutely correct. So a loan which has been given for a specified period, let's say 5 years, 6 years, है ना? Cash credit, Hitesh is saying cash credit. What is cash credit? And related to cash credit, there is a concept of drawing power, which we will discuss in detail. ठीक है, CC limit, absolutely correct. Ban Reddy, Himanshu, Rajaram, Siddharth. तो मनोज हाउसिंग लोन, yes, absolutely correct. ठीक है, so all these kinds of loans are there. One by one, we'll be discussing each and every loan in detail. ठीक है? Now, students, with respect to advances, देखो, when we have done SA 315, हम क्या पढ़ते हैं? The auditor needs to identify and assess the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. तो अब हम क्या कर रहे हैं? जो एंटिटी है बैंक और जो उसका एनवायरमेंट है, उसमें जो एक मेजर कंपोनेंट है ना एडवांसेस को, वी आर ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट. तो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग कि एडवांसेस से रिलेटेड क्या एनवायरमेंट है, व्हाट इज द इंटरनल कंट्रोल दैट इज टू बी इंप्लीमेंटेड बाय अ बैंक.
है ना, what all are the types of advances, है ना, what are the various prudential norms with respect to advances which are being issued by by RBI. So prudential norm are what? The judicious norms which are issued by RBI in this case, ठीक है. And then we will have a look at all the substantive procedure with respect to advances that the auditor needs to perform when he is checking the advances. So before checking the advances, let us try to understand each and every aspect with respect to advances. Okay? So first and foremost, let us see that there is a broad bifurcation of advances, which says that advances can be funded loans and these can be non-funded loans. Okay? What are funded loans? So students, as the name suggests, where fund is involved, Hana, where actual transfer of funds is involved. For example, term loan. यहाँ पर बैंक पैसा उठाकर borrower के account में transfer करता है ना. So what happens is there is an actual transfer of funds. Term loan, है ना? Cash credit. So CC limit, when a company needs funds for its to meet its working capital requirement, it may approach a bank for a CC limit, cash credit limits, on the security of its stock or debtors. है ना? वो कैसे होगा? What will be the limit? What will be the drawing power? We will discuss that. So यहाँ पर भी तो एक fund को transfer कर देता है bank to the CC account of the borrower. So the fund is actually transferred. Where the bank is giving loan to staff, यहाँ पर भी तो cash का actual और funds का actual transfer हुआ है ना. So funded, as the name suggests, that there is actual transfer of funds. ठीक है? Now what is meant by non-funded loans? So non-funded loans, they as such do not involve transfer of fund at this moment. There is a possibility that there may be a transfer of fund at a future date. Example, so I can say, what are these? They do not involve such transfers. Such transfer is transfer of funds. Though there is a possibility that transfer of fund might be there in the future. For example, your bank guarantees. Quickly tell me, anyone having any idea about bank guarantees and letter of credit? So today we are going to understand various terminologies, various new terminologies with respect to advances. So yes, demand loan, Hitesh, you are absolutely correct. Funded loan में demand loan. That it as the name suggests, it is to be repaid when it is demanded. Demand loan. ठीक है? ठीक है. So let us try to understand what bank guarantee. So simple है. Suppose Mr. Ram is there. ठीक है? And he is the buyer. Now Mr. Sham, he is the seller and he has to sell the goods to Mr. Ram on credit. Now, Mr. Ram is going to make payments after, let's say, 3-4 months. Okay? So how will Mr. Sham sell the goods to Mr. Ram? Mr. Ram may ask Mr. Sham that, Mr. Sham may ask Mr. Ram that, Mr. Ram, you please give me a bank guarantee. Ask your bank to give me a guarantee that after 3-4 months, if you do not make me the payment, your bank is going to guarantee such payment. Hana? So this is what the bank guarantee. So as such, today, see, when Mr. Ram will approach his bank that, see, please give a bank guarantee to Mr. Sham because I am buying certain goods. So as such, the bank is not giving any funds to Mr. Ram or to Mr. Sham. Yes, the bank will be charging some fees from Mr. Ram, but otherwise there is no transfer of funds. That is why it is called what? Non-funded facilities. Okay? Non-funded facilities. So this is the example of bank guarantee. Now let us try to understand
the concept of letter of credit. Quickly send in your replies. Any one of you aware about letter of credit? So see, this is the example. I am on page number 12.22 of your module. So let's say here the seller is an Indian exporter. Okay, again, Mr. Sham. He is selling the goods. He is exporting the goods to a foreign buyer. Now, again, when he is exporting the goods, he's selling the goods to the foreign buyer. Now, again, the payment will be received. The goods are sold on credit. The payment will be received after 3-4 months. And also, there may be a doubt with respect to the payment that will be received from the foreign buyer. So now, what is the option available with respect so that such transaction takes place? This foreign buyer, he will approach his bank in the foreign country and request the bank to issue a letter of credit to the Indian exporter banks in India. Okay? So the foreign bank, the buyer's bank, is known as what? Issuing bank. And he'll issue a letter of credit to the Indian bank, the bank of the Indian exporter, and this bank becomes what? Advising bank. So both the banks will be charging the fees. Hana? So what is the letter of credit? So the foreign bank, it will issue a letter of credit whereby it will say that if after 3-4 months this foreign buyer doesn't make a payment, so in that case this LC will get devolved on the issuing bank, and this bank is going to make payment to the advising bank, who in turn will pay payment to the Indian exporter. Okay? So basically, what is it again here? No fund transfer is involved as such, but there is a possibility that the funds may be transferred at a later date. So that is why it is what? Non-funded facility, non-funded loan. Okay, is it clear? The example of letter of credit, yes, it is used with respect to the import-export transaction, widely used in import-export transaction. Namrata, you are absolutely correct. है ना? So अभी तक हमने क्या पढ़ा है? What are funded facilities and what are non-funded facilities? Okay? Term loans, you all know that the loans that are given for, let's say 5 years, 6 years, 7 years, है ना? Cash credit. Let us try to understand the concept of cash credit now. So, students, when we are understanding the concept of cash credit, let us also understand another concept related to it, which is what? The concept of drawing power. है ना? So why am I making you understand all these things? Because हम क्या समझ रहे हैं? We are understanding one of the most important items of the balance sheet of a banking company, which is advances. And the various types of advances में term loan आता है, जो आपको पता है क्या होता है. Bank guarantee आता है, which you have understood. है ना, जो हमने example discuss किया था. Then we saw the example in the module with respect to letter of credit. I hope these three are clear. Quickly send in your replies. Manoj, you are correct. Quickly send in your replies. जो अभी तक हमने discuss किया, is it clear? Then we will discuss a very important concept with respect to cash credit limit and drawing power. Quickly send in your replies. So in case of failure by the other party, so Sriram, the bank will have to make the payment. Obviously, bank will recover it from the Indian exporter, but as the bank will have to, at the funds instance, the bank will have to make the payment ना, because bank ने guarantee दी है ना, या bank ने letter of credit issue किया है ना.
So let us have a look at letter of credit example again, as many of you are saying. So here what is happening, there is an Indian exporter, Mr. Sham, who is the seller, and he needs to export good to a buyer in a foreign country. Okay. Now he is skeptical as to whether the payment will be received or not, or when will it be received. So what happens is he asks the buyer to get an LC from the buyer's bank. So the foreign buyer will approach his bank in the foreign country and request the bank to issue a letter of credit on behalf of what? The buyer to the bank of the seller. So when the issuing bank, the foreign bank is issuing the letter of credit, it is basically saying that after 3-4 months, if this buyer doesn't make the payment, then this LC will get devolved on the issuing bank and it will make payment to the advising bank, who will in turn make payment to the seller. Okay, is it clear, Sri Ram and Archana? Okay. Now let us try to understand the concept of cash credit limit. So see, let's say Mr. Ram is there and he approaches bank that, see, I need funds for working capital. I need funds for working capital from time to time. Okay? He approaches his bank. With respect to security part, Bhardwaj, I'll be taking that. Just wait. And Siddharth, your queries are visible to me. So Mr. Ram, he approaches his bank because he has the working capital. He needs funds for meeting his working capital requirements. Okay? Now what happens? Bank tell him that, okay, you may take a loan. But Mr. Ram tells him that, see, I need funds from time to time. Okay? So what happens? The bank sanctions, let's say, I've taken the example of what, 50 lakhs. That 50 lakhs is sanctioned to you, that this is the total exposure. This is the maximum amount that I can give it to you. So you have 50 lakhs in your account. You may draw it as and when the same is required. Okay? Now, with respect to every customer, bank have their own arrangements. So let's say bank keep a margin of 25%. Okay? Now, before understanding the concept of 25% margin, let us see that sanction limit 50 lakh hai. Now, see, when bank is giving money to Mr. Ram, bank will not give this money without any security. Bank will ask Mr. Ram to provide a security, na tabhi to paisa degi na, bank bhi to business kar rahi hai na. So let's say, since it is the working capital requirement, okay, so let's say Mr. Ram hypothecate the stock, that with respect to the security, you may consider my stock. Okay? Now, bank makes an arrangement whereby it says that after considering a margin of 25%, कि जितना आपका stock है, उसका 75% is your drawing power. What is drawing power? See, sanction limit is the maximum amount, which is the maximum exposure or the maximum fund that is been given in the CC account of Mr. Ram. Okay? Now, there is another concept of drawing power that is based on the security, primary security that Mr. Ram is giving. And after deducting the margin क्या होता है कि देखो अगर 1 crore की इन्वेंट्री है तो बैंक 1 crore का थोड़ा ना लोन दे देगा, कुछ मार्जिन भी तो रखेगा ना. सो लेट्स से 1 crore की अगर आपकी इन्वेंट्री है तो 75 lakhs का लोन दिया है, that 25% is to be borne by the borrower itself. The bank will fund 75%. कुछ मार्जिन रख के चलेंगे ना. ठीक है? So the sanction limit is what? 50 lakhs. Now, this here the primary security is what? Stock. So, security. So, Mr. Ram will be required
to submit monthly stock statements to the bank in order to show as to what stock is lying with Mr. Ram. Because स्टॉक की सिक्योरिटी पे ही तो आपको लोन मिला है ना, आपको सीसी लिमिट मिली है ना, तो स्टॉक स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड. सो लेट्स से विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मंथ द स्टॉक स्टेटमेंट इट सेज दैट 40 lakhs का इन्वेंट्री इज लाइंग विद मिस्टर राम. ठीक है. नाउ बैंक हैज डिसाइडेड दैट बैंक विल कीप अ मार्जिन ऑफ व्हाट 25%, कि 25% छोड़ के 75% जितना लोन दे देंगे. सो this stock minus, so basically the primary security minus the margin amount, it derives the drawing power कि कितना ड्रॉ कर सकते हैं, 30 lakhs. Now why then sanction limit of 50 lakhs is there? So the thumb rule is that out of the sanction limit and the drawing power, the borrower can draw out of these two, the lower of the two. So here sanction limit is what? 50 lakhs and drawing power is 30 lakhs. So the lower of two is 30 lakhs. So the borrower, Mr. Ram, can draw how much? 30 lakh rupees. ठीक है. Now students, sanction limit हमने क्या बताया कि maximum exposure है, ये total exposure है जो बैंक इस CC limit के लिए बैंक is ready to pay. So 50 lakhs ka sanction limit has been decided, but since it is given based on the primary security of stocks, तो stocks की भी तो value देखोगे ना. तो let's say in the first month stock की value 40 lakhs है and the bank decides कि 25% margin रखूंगा और उसके बाद जो 75% of the stock है ना उसके लिए I'll give the drawing power. So lower of 50 lakhs and 30 lakhs is 30 lakhs which the bank can draw. ठीक है. Now let us have a look at the next month bank's stock statement. So the stock statement, let's say it is to be submitted with the bank on a monthly basis. Now since there will always be a movement of the stock, let's say in the next month there is the stock of 70 lakhs, है ना. तो 25% margin रखने के बाद drawing power कितनी है? 52.5 lakhs. Now how much amount can the borrower, Mr. Ram in this case, can he draw? So it is what? Lower of sanction limit and drawing power. So quickly tell me in the second case what will be your reply? So sanction limit to 50 lakhs hai. Quickly send in your replies. Quickly send in your replies. इसमें क्या आएगा? देखो अदिति, हाँ तो आंसर इज 50 lakhs. सी मार्जिन मनी क्या हो गया? मार्जिन क्या हो गया? देखो अगर आप कोई लोन लेने जा रहे हो, ठीक है, यू नीड अ लोन ऑफ लेट्स से 1 CR, है ना, उसके लिए आपने कोई सिक्योरिटी दी है, ठीक है, एंड लेट्स से वो 1 CR की ही वैल्यू है उसकी, ठीक है. अब बैंक भी तो कुछ मार्जिन रखेगा ना कि इतना मार्जिन छोड़ के मैं बाकी सिक्योरिटी के लिए लेट्स से 75% के लिए लोन दे देता हूं. कल को वैल्यू भी तो ऊपर नीचे हो सकती है ना उस सिक्योरिटी की. लेट्स से लेटर ऑन दिस person is not able to repay this amount and the value of the security, let's say gold ही दिया था, है ना, तो इसकी वैल्यू सिर्फ 80 lakhs रह गई है. तो अगर बैंक ने 1 crore का लोन दे दिया होता तो बैंक वुड हैव इनकर्ड अ लॉस. सो दैट इज व्हाई बैंक डिसाइड्स अ मार्जिन कि इतना पैसा तो आप लगाओ, ठीक है, 25% मार्जिन मैं नहीं लगा रहा हूं, मैं 25% मार्जिन छोड़ के रेस्ट 75% आई फाइनेंस, ठीक है. सो सी इन दिस केस अगर बैंक ने 75 lakhs ही दिए हैं एंड लेटर ऑन गोल्ड की वैल्यू 80 lakhs रह गई है तो अब बैंक को कोई लॉस नहीं है ना. अगर बैंक ने हैड बैंक गिवन 1 crore एज अ लोन विद अ सिक्योरिटी ऑफ 1 crore तो फिर तो बैंक को लोन लॉस हो जाता ना. अदिति, इज इट क्लियर? अदिति, क्विकली सेंड इन योर रिप्लाईज. सो इट इज शॉर्ट टर्म, है ना. सीसी तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए होता है ना हिमांशु.
So this 25%, देखो वैसे तो RBI guidelines and all are there, but it depends upon the sanction letter. जो भी arrangement between the bank and the borrower होता है ना, तो it depends upon that. And primary security में bank क्या रख सकता है? Bank में hypothecate the stock or the debtors, है ना? तो 25% margin which is prevailing rate, and further it depends upon what the arrangements between the bank and the borrowers. ठीक है मनोज, is your doubt clear? हिमांशु, इज योर डाउट क्लियर? ठीक है, तो आई विल रिपीट इट, है ना? एंड अर्चना, इज योर डाउट क्लियर? अब देखो यहीं से एक और कॉन्सेप्ट, अच्छा ठीक है बाद में समझते हैं, पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट अगेन. सो बेसिकली मिस्टर राम, इन ऑर्डर टू फंड हिज व्हाट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, है ना, उसके लिए ही अप्रोचेस द बैंक, और बैंक उनको क्या देते हैं? कैश क्रेडिट लिमिट. तो कुछ फंड आ जाएगा in the CC account of Mr. Ram, whereby let's say the sanction limit which has been given is what 50 lakhs, कि 50 लाख तक का amount is in your account. But there is a concept of what? Drawing power. अब ये क्या होता है? देखो when bank has sanctioned 50 lakhs, तो वो ऐसी थोड़ी ना दे देगा, बैंक भी तो बिजनेस कर रहा है ना, तो बैंक will ask for a security from Mr. Ram. So let's say Mr. Ram hypothecates what? The stock, the inventory which is lying with him as the primary security, है ना? तो the way I have explained you this example, कि अगर 1 crore की सिक्योरिटी है तो 1 crore का लोन थोड़ी ना दे दोगे, कुछ मार्जिन भी तो रखोगे ना, 20% का, 25% का. So let's say here जो when the CC is given with respect to hypothecation of stock, let's say the bank decides to keep a margin at 25%. It is generally 25% only. Rest is it depends upon the arrangements between the borrowers and the banks. ठीक है? Now the borrower, Mr. Ram, he'll be required to give the bank the stock statement, है ना, containing the details as to कितना stock है, उसी के against तो CC दिया जा रहा है ना, तो अगर वो stock primary security है तो उसका monthly detail देना पड़ेगा. तो monthly the bank will be calculating drawing power. Why? Because stock तो fluctuate होता रहेगा ना, movement will be there ना, in out will be there, है ना. So that is why every month drawing power will be calculated. Up, let's say here for the first month the stock statement contains that the inventory lying with Mr. Ram is what? 40 lakhs. The bank decides to keep a margin of 25%, तो 30 lakhs का drawing power आता है. Now how much amount the Mr. Ram can withdraw? See, sanction limit 50 है, but drawing power तो 30 है ना, so the lower of the two, that is 30 lakhs. ठीक है? Now in this case, let's say there is an addition to stock and it is 70 lakhs in the next month. So since I told you that there will be fluctuation in the inventory amount, which is the primary security, so drawing power to will have to be calculated now. So 75% is what? 52.5, though the sanction limit is what? 50. So अगर आपका drawing power 52.5 है, but sanction limit तो 50 है ना, तो lower of the two is what? 50 lakhs, which Mr. Ram can draw. अभी समझ आया कैश क्रेडिट क्या होता है? Hiril, you can send in your queries again, है ना? I haven't received any of your queries, so please send it again. So are you able to understand? In order to meet the working capital requirements, the borrowers may hypothecate their inventory or debtors, trade receivables also, or both, है ना? And based on the stock statement or the debtor statement and considering the margin that the bank will keep, the drawing power will be calculated, and how much amount at a point of time can the borrower or the person availing the CC can withdraw, with that is what? Lower of sanction limit and the drawing power. So Smita and Aditya are saying, ma'am, it is clear. Others also please reply whether it is clear or not, because we are going to use this example again and again in this chapter. A very important example, a very important concept. And in fact, you will see there are 3 to 4 pages discussion on this drawing power, cash credit, what are the audit procedures with respect to all these. So please tell me whether it is clear or not.
Hiral, send in your replies again. So Aditi, it is not necessary. The inventory will change, will keep on changing depending upon the inventory. Margin is 25% say. So depending upon the inventory lying with the borrower, the stock statements which have been presented, there will be a change in the DP. Aditi, is it clear? See, Sriram, if the bank is giving, let's say, a loan, whatever amount of advance the bank is giving, ठीक है? So ये backward calculation थोड़ी ना होगा, बैंक को तो अपना security चाहिए है ना. So if the bank is giving a loan of let's say 1.5 crores, है ना, तो उसके लिए accordingly bank will determine the margin ना. Because बैंक को ये थोड़ी ना कि मेरे को इस पार्टी को लोन देना ही देना है, बैंक को भी तो देखना है ना whether it is secured or not. कल को ऐसा तो नहीं है कि repayment ही ना आए, है ना. So why will bank do this backward calculation? ये कोई there is no relationship between the bank and the party ना. तो बैंक विल डेफिनेटली कीप अ मार्जिन ना, कि कल को कोई वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है. सो बैंक शुड नॉट बी एट लॉस. यस हिरल, यू आर करेक्ट. ठीक है. सो इफ यू रिमेंबर, लाइक पहले ऐसे होता था कार लोन्स में, लाइक इफ द कॉस्ट ऑफ द कार इज 8 lakhs, so 1 or 2 lakh were to be given by the borrower. The balance amount used to be financed by the bank, है ना. तो वो भी तो मार्जिन का ही एक तरीके से काम है. ठीक है हिरल, इज इट क्लियर? See, depending upon the inventory lying with the borrower, depending upon the arrangements between the borrower and the bank manager, the sanction limit, the drawing powers can be changed. But the thumb rule is what amount can be drawn is the lower of sanction limit and the DP. ठीक है खुशी? So whatever amount is drawn, Himanshu, the reply to your query. ठीक है. So is it clear? So we have done what? The letter of credit. ठीक है. Now tell me, anybody having any idea with respect to bills discounted and purchased? Yes, Hiran, you all are absolutely fortunate because you have done banking in the morning session and now audit of banks in the evening session. That is good. So quickly tell me, any idea about this? You all must have done this in your accounts. Okay. So basically, let's say if I have exported certain goods, Hana, I have the bills and everything with me, and I am in urgent need of cash, of funds. I may approach the bank that, see, these are my bills, but these will be realizable after 3 months. So you purchase these bills, you discount them. That is what you may charge some fees. ठीक है, you may deduct some amount. Let's say मेरे कुछ debtors जो हैं, जो realize कब होने हैं, the bills amount to let's say rupees 40 lakhs, है ना. So I'll ask the bank कि आप कुछ इसको discount कर दो, कुछ amount आप charge कर लो, let's say 5 lakhs, and बाकी आप मेरे को 35 lakh rupees अभी दे दो. ठीक है. So the bank has discounted and purchased the bills, है ना, which will be repaid by that party to bank after 3 months. And for that bank has charged this amount ना, कि 40 lakhs के बदले मेरे को सिर्फ 35 lakhs दिया है ना. Is it clear? हाँ, urgent need of fund के लिए this is the concept. ठीक है. Then there are staff loans, है ना, with respect to bank interest bearing staff loans. वो कैसे होते हैं? We will also discuss that. ठीक है. So advances में major क्या क्या types होती है? We have discussed about all those advances. Now, how these advances are required to be shown in the balance sheet of a banking company? It is given where in Form A of third schedule to Banking Regulation Act 1949. So it says जो भी total of advances है ना, देखो उसको ना, the bank is required to show 3 bifurcation of these advances, है ना. So first bifurcation of the total of advances कैसे आएगा? What are the bills purchased and discounted?
कैश क्रेडिट्स, ओवरड्राफ्ट्स एंड लोन रिपेबल ऑन डिमांड एंड टर्म लोन। तो ये बेसिकली फंक्शनल बेसिस पे एक बाइफिकेशन करके आपको टोटल एडवांसेस जो भी अमाउंट है ये शो करना होगा, ठीक है। द सेकेंड बाइफिकेशन, तो दिस अमाउंट इज गोइंग टू रिमेन द सेम, इसी अमाउंट को अब आप कैसे शो करोगे? नेक्स्ट बाइफिकेशन इज व्हाट? द लोन्स दैट आर सिक्योर्ड बाय टैंजिबल एसेट्स, कवर्ड बाय बैंक गारंटीज एंड अनसिक्योर्ड। अब बाइफिकेशन ऐसे शो करना होगा, ये टोटल तो सेम है बट टू बी शोन अगेन अंडर दीज हेड्स एज पर द सिक्योरिटी। यहां पर क्या था? बेस्ड ऑन फंक्शनल डिफरेंसेस की बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड में कितना पैसा है, कैश क्रेडिट में कितना है, ओडी में कितना है, लोन रिपेबल ऑन डिमांड, टर्म लोन में कितना है। सेम वे बेस्ड ऑन सिक्योरिटी आपको सेम अमाउंट को दिखाना है। एंड द लास्ट बाइफिकेशन दैट द बैंक आर रिक्वायर्ड टू शो इज एडवांसेस इन इंडिया, एडवांसेस आउटसाइड इंडिया। सो इन इंडिया देयर कैन बी प्रायोरिटी सेक्टर, एडवांसेस टू प्रायोरिटी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, बैंक्स एंड अदर्स, and from outside India, due from banks, due from others, bill purchase and discounted, syndicate loans and others. So let us quickly have a look at the balance sheet that I was sharing with you. तो देखो ये advances है ना? So I'm not able to write here because this is the direct download from the website. So ये advances है, तो देखो यहाँ पर जो ये वाला total आ रहा है 2794 वाला figure आ रहा है. Can you all see it on page number 203? ठीक है। सो अब इसको कैसे शो किया है? ए के अंदर बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड, सीसी, ओवरड्राफ्ट, लोन्स रिपेबल एंड टर्म लोन, ठीक है। देन अगेन दिस 2794 वाले ही अमाउंट को कैसे शो किया है? एज दिस बी पॉइंट, सिक्योर्ड बाय टैंजिबल एसेट्स, कवर्ड बाय बैंक एंड अनसिक्योर्ड, है ना। देन अगेन एडवांसेस इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया को ये 2794 वाले अमाउंट को ही अगेन ऐसे शो किया हुआ है। आर यू ऑल एबल टू सी? बिकॉज आई एम नॉट एबल टू मार्क एनीथिंग ऑन दिस शीट, है ना। सो दिस इज द बाइफिकेशन विच इज रिक्वायर्ड बाय फॉर्म ए ऑफ थर्ड शेड्यूल ऑफ द बैंक टू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. क्विकली टेल मी, आर यू ऑल एबल टू सी इट और नॉट? I'll zoom it. Wait. ठीक है। सो देखो ये वाला अमाउंट है ना 2794. सो पहले बाइफिकेशन कैसे दिया? नहीं, आई एम नॉट एबल टू राइट, रुको, ये वाला अमाउंट 2794, ठीक है। सो बिल्स परचेज, सीसी, ओवरड्राफ्ट, रिपेबल ऑन डिमांड एंड टर्म लोन, है ना। बाइफिकेशन ऑफ दिस सेम अमाउंट इज अगेन गिवन एज व्हाट? Secured as per security now, secured by tangible assets, covered by bank and unsecured. Then bifurcation of this same amount, this amount is given as what? Advances in India and outside India, and the bifurcation that is required. Tell me, is it clear now? The syndicate loans क्या होते हैं? The loans that is given by a group of lenders, है ना। बहुत सारे लोग जब बहुत सारे लेंडर्स, बहुत सारे बैंक्स जब मिलकर लोन देते हैं, 4-5 बैंक्स, they provide funds to a single borrower, तो syndicate a group of bank हो गया ना, ठीक है। whose doubt was it? Aditi, is it clear? ठीक है। so this is the format and I have shown you one of the practical report also, है ना। तो I was telling you that same total का आपको 3 times bifurcation दिखाना है बैंक को, functional differences, security wise and sector wise, and basically in India and outside India. Is it clear? Yes, Nilabjo, you are clear, है ना। तो syndicate banks loan by, so I'll write here, loan by group of lenders who get together to provide fund to single borrower, ठीक है। and we will be doing this concept in detail later on, ठीक है। so is it clear, Nilabjo, and whose doubt was it? Aditi and everyone, whatever we have done, is it clear? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? वैसे हमने advances में we have understood the concept of what? BGs, bank guarantee, then LC, letter of credit, then हमने समझा cash credit and drawing power, and then we saw as to how the balance sheet, in the balance sheet, the advances schedule, how will it appear as per the format.
ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ सी another classification of advances can be what sector wise. ठीक है, तो आरबीआई में इशू कॉमन गाइडलाइंस की प्रायोरिटी सेक्टर है. प्रायोरिटी सेक्टर फॉर एग्जांपल व्हाट, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशन, हाउसिंग. ठीक है, एजुकेशन में आई कैन पर्टिकुलरली से लेट्स से गर्ल्स एजुकेशन, है ना. तो आरबीआई में issue common guidelines that with respect to such sectors इतना target of loan is to be governed during all these years, है ना, जितने भी time के लिए these are considered as the priority sector. With respect to these sectors, the rate of interest, the service charges, है ना, with respect to the sanction, everything will be prescribed in the guidelines issued by the ICI. ठीक है, sorry, by the RBI. So these are what the loans that are given to what priority sector. If you can see, if you remember, here we have done na ki priority sector. So the loans that have been given by the banks to the priority sectors is to be shown separately. Simple hai ye. ठीक है. Now the loans may be divided based on what, the security, the kind of security that has been given. ठीक है, ठीक है. Now there is a concept of primary security and collateral security. Now let us go to our example of CC. I told you that we will be using this example again and again. So I am assuming that you all are clear with this example. So let's say here, when Mr. Ram approaches the banks ask Mr. Ram to give a security as the primary security, principal security, since the CC is for what, working capital needs, है ना. So the Mr. Ram, the borrower, he hypothecates what, the stock or the debtors. So they become what, the primary security, that is the security for which the credit has been extended. तो अगर आप हाउस लोन लेने जाते हो and you get a loan and you keep the papers of the house with the bank, है ना, as a security, so that house becomes the primary security. ठीक है, ठीक है. Now here I told you that stock जो है जिसके अगेंस्ट सीसी लिमिट लिया है, that is the primary security. Now it might happen now that the bank may say that, see, this month there has been a drastic reduction in the value of your stock, है ना. Let's say stock statement जो auditor the Mr. Ram files here, ये 20 lakhs का आ जाता है ना. So the bank may ask for an additional security कि देखो भाई stock में तो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाता है आपका रेट, please give me an additional security, which is what, collateral security. Additional security भी तो दे सकता है ना Mr. Ram. So what he will do, he has hypothecated his stock as what, the primary security. He may give the papers of his house as what, secondary, collateral or additional security. ठीक है. So in our example that we were discussing, suppose you have gone to take a house loan, है ना. तो आप 1 CR का लोन लेते हो और उसके बदले में प्राइमरी सिक्योरिटी में अपने हाउस के पेपर्स रख देते हो. तो हियर द हाउस बिकम्स व्हाट, प्राइमरी सिक्योरिटी. नाउ इफ बैंक्स आस्क फॉर एन एडिशनल सिक्योरिटी, है ना, सो यू लेट्स से यू टेक सम गोल्ड एंड यू प्लेज इट विद द बैंक, तो अब ये क्या हो गया, कोलेटरल सिक्योरिटी. प्राइमरी सिक्योरिटी क्या है, जिसके लिए आपने लोन लिया है, primary security, and this is what, collateral is what, additional security. ठीक है. So let us have a look at this concept from the module. Primary security, security offered by the borrower for bank finance, जैसे stock दिया था या यहाँ पर house के papers, or the ones against which credit has been extended by bank. house के लिए house loan मिला था ना, या वर्किंग कैपिटल, इन्वेंट्री को फाइनेंस करने के लिए ही तो आपने स्टॉक को आपने वो किया ना, हाइपोथिकेट किया. सो दिस इज द प्रिंसिपल सिक्योरिटी फॉर एडवांस. ठीक है. नाउ व्हाट इज कोलेटरल? इट इज एन एडिशनल सिक्योरिटी. इट कैन बी इन एनी फॉर्म, टैंजिबल, इंटैंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, एनीथिंग. ठीक है. टैंजिबल
आपका गोल्ड भी हो सकता है, स्टॉक भी हो सकता है, इंटेंजिबल गारंटी हो सकती है, मूवेबल अगेन गोल्ड हो सकता है, इमूवेबल अगेन प्रॉपर्टी हो सकती है. सो व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज? पर्सनल गारंटी, सिक्योरिटी ऑफ गारंटर. कोई गारंटर है, थर्ड पार्टी है, वो गारंटी करता है कि कल को ये रीपे नहीं करेगा तो आई गारंटी, है ना, आई विल पे. सो पर्सनल गारंटी. बुक स्टॉक, डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, है ना, सीसी के केस में दैट वी हैव सीन. ओल्ड गोल्ड या टूर्नामेंट, gold ornaments या bullion is what? Gold only. Immovable property, plantation for farmers, their crops, है ना, they can be used as security. Third party guarantees can be there. Bankers general lien, what is this? I'll explain it to you. Life insurance policies, how life insurance policies can be used as security, I'll take this up in detail when it will come. And the shares, that is the stock exchange securities and other instruments, can always be used as the security. See, नीलाब्जो, it depends upon case to case, है ना. प्राइमरी सिक्योरिटी क्या है, उसकी कितनी वैल्यू है, बैंक को लगता है कि द मार्जिन दैट इट वांट्स टू कीप वो है या नहीं, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन केस टू केस. ठीक है. एंड प्रभास, दीज आर सेम वट एवर यू हैव रिटन. ठीक है. तो कोई डाउट है? Is it clear? So we have understood the concept of what? Primary security. तो primary security क्या होता है? जिसके लिए आपने लोन लिया है, जिस asset को बनाने के लिए, या with respect to which, against which you have taken the loan, or the bank has extended the finance to you. ठीक है. So this is what primary security, principal security, and the additional one is what? Collateral security. Now there are various mode of creation of security, है ना. अभी मैंने आपको क्या बोला था कि you may hypothecate the stock, you may pledge the gold. तो ये pledge, mortgage, hypothecate, assignment, set off, ये सब क्या होता है? Now we will be discussing that, and lien. ठीक है. So before that quickly send in जितना भी पढ़ा है क्लियर है? तो अभी तक हमने ज्यादा कुछ नहीं किया है. एडवांसेस की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया है, जिसमें हमने सीसी एंड ड्रॉइंग पावर को डिटेल में डिस्कस किया है. लेटर ऑफ क्रेडिट, बीजीज को, देन बैलेंस शीट में कैसा आएगा, एंड देन प्राइमरी एंड कोलेटरल सिक्योरिटी. सो क्विकली सेंड इन योर रिप्लाई. शैल वी प्रोसीड फर्दर? So mode of creation of security. So since we have done hypothecation, let us start with this only. Hypothecation. So it takes place with the help of a hypothecation agreement. तो क्या होगा यहाँ पर? So let's say Mr. Ram has taken the CC with against his what? Stock or debtors. So he will hypothecate his stock or debtors with the bank. ठीक है. So when the hypothecation takes place, it takes place by an agreement where the stock is charged to the bank. ठीक है. Though the ownership and the possession are not transferred to the bank. Ownership या possession थोड़ी ना चली जाती है बैंक को, but it is charged to the bank. हाँ, ऐसा हो सकता है कि जहां पर मिस्टर राम का स्टॉक था, वहां पर बैंक अपना एक बोर्ड लगा के आ जाएगा, लेट्स से एसबीआई, कि दिस स्टॉक हैज बीन हाइपोथिकेटेड टू एसबीआई बैंक, कि कल को मिस्टर राम ही किसी और को किसी और को हाइपोथिकेट ना कर दे, या वट एवर विल बी मूवमेंट इन दैट स्टॉक, इट विल बी अप्रूव्ड बाय द बैंक अथॉरिटीज और द पर्सोनल ऑफ द बैंक हु इज सिटिंग देयर, है ना. सो एज सच द ओनरशिप एंड पोजेशन will not go to bank, it will remain with the borrower himself. Hypothecation, and it takes place through a hypothecation agreement. So it is mentioned here, neither ownership nor possession is transferred to the bank. However, the borrower holds the physical possession of goods as an agent or trustee of the bank. The borrower periodically submit statement regarding quantity and value of hypothecated assets like stocks, debtors to the lending banker on the basis of which the drawing power of the borrower is fixed. Simple है, ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है. हाँ, no essays, we will not be dealing with any essay in this chapter. ठीक है. अब हीरल, बोरोअर अगर लोन ले रहा है, बोरोअर सेइंग कि देखो मैं पे कर दूंगा, मैं ही गारंटी दे देता हूं, टेल मी हीरल, थर्ड पार्टी से लिखवाएंगे ना?
ठीक है. So hypothecation, is it clear? And I told you that ownership or the possession of the stock, if it is hypothecated, it is not transferred to the bank. The borrower holds the physical possession. ठीक है. And practically ये कैसे होता है? I told you that अगर Mr. Ram के godown में एक room is there whereby the stock is hypothecated to, let's say, SBI bank. So a board of SBI will be put there, a small board whereby it will be mentioned hypothecated to bank. And it might be possible that one of the persons from SBI will sit there to make sure that whatever movement is done there, it is done through the approval of the personnel from the bank. ठीक है. So this is all about what? Hypothecation. Now what is pledge? Try to understand this with the help of what? Gold loan. है ना. आपका मुथूट गोल्ड लोन होता है ना, या मणिपुरन गोल्ड लोन होता है ना. सो व्हाट हैपेंस हियर, देखो हाइपोथिकेशन में द ओनरशिप और पोजेशन को आप ट्रांसफर नहीं करते ना बैंक को, पर यहाँ पर द पोजेशन, द डिलीवरी ऑफ द गुड्स बाय द बोरोवर इज डन टू द बैंकर. तो अगर गोल्ड लोन लेना है तो आई विल गिव द गोल्ड टू द बैंक, कि मैं गिरवी रख दूंगी गोल्ड को, एंड बैंक विल गिव मी द लोन, है ना. पर बैंक अब उस गोल्ड लोन का पोजेशन, गोल्ड का पोजेशन ले लेगा ना. सो प्लेज इन्वॉल्व्स बेलमेंट. बेलमेंट इज व्हाट? डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द बोरोवर टू द लेंडिंग बैंक विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग अ चार्ज. ठीक है. एंड द प्लेज ऑफ गुड कॉन्स्टिट्यूट्स अ स्पेसिफिक और फिक्स चार्ज. अब वो बैंक के पास गोल्ड है, and loan, the bank will give the loan to the borrower based on the delivery of such gold. ठीक है. अब देखो जब वो गोल्ड रिसीव हुआ है तो what will be the internal control in case of this pledge agreement? That it will be checked, है ना, it will be duly packed. तो ये क्या हो जाएगा? इंटरनल कंट्रोल. और ऑडिटर को क्या देखना है? ये इंटरनल कंट्रोल ठीक है या नहीं, है ना. तो ये कैसे देखेंगे ये हम आगे वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट दिस विद द इंटरनल कंट्रोल एंड द सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स दैट द ऑडिटर विल परफॉर्म. ठीक है ना. हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट प्रभास जैन, दैट विद रिस्पेक्ट टू हाइपोथिकेशन ऑन अ नंबर ऑफ ऑटो रिक्शाज एट द बैक इट इज रिटन हाइपोथिकेटेड टू सो एंड सो बैंक, है ना. सो वो क्या होता है? हाइपोथिकेट होते हैं. तो ओनरशिप और पोजेशन तो यहाँ पर है ना, बट देयर इज अ चार्ज क्रिएटेड बाय द बैंक. ठीक है. सो जब हाइपोथिकेटेड लिखा हुआ है ना तो इट कैन नॉट बी सोल्ड. ठीक है. इज इट क्लियर प्रभास? यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. यस नीलाब्जो, सीसी लिमिट में ऐसे हाइपोथिकेशन ही होता है. ठीक है. यस मनोज, व्हीकल लोन भी हाइपोथिकेशन में आ जाएगा. ठीक है. नाउ प्लेज यू हैव अंडरस्टूड. नाउ व्हाट इज मॉर्टगेज? देखो हाइपोथिकेशन में भी मूवेबल प्रॉपर्टी था ना. So my pen is not working. And pledge में भी movable property है. So mortgage is almost the same thing, but it is with respect to your immovable property, your house, your factory, your shop, है ना. So यहाँ पर अब क्या है? Let's say मेरे को लोन चाहिए. I'll give the papers, the title deed of my house to the banker with, and he will give me the loan. So एक mere, there will be a mere delivery of title deeds or the documents related to deed to the bank, to the title to the banker, and bank will give me the loan. So this is what mortgage. तो इसको basically क्या बोलते हैं? Equitable mortgage, जहां पर mere delivery of title, कि मेरे जो घर के पेपर हैं वो बैंक को दे दिया, बैंक ने मेरे को लोन दे दिया. Simple. When in this arrangement it is registered by way of signing a mortgage deed, कि टाइटल पेपर्स तो दिए बट एक मॉर्टगेज डीड भी साइन हुई है और रजिस्टर हुई है, इट बिकम्स व्हाट? रजिस्टर्ड मॉर्टगेज. तो ऑलमोस्ट सेम एज हाइपोथिकेशन, बट यहां पर क्या है? इट इज पर्टेनिंग टू व्हाट? योर इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है. तो सी, mortgage are of several kinds, but the most important are registered and equitable. तो पहले equitable पढ़ते हैं. Equitable is effected by mere delivery of title deeds or other documents of title with the intent to create security thereof. And registered में क्या है? It can be effected by registered instrument called mortgage deed signed by the mortgager. It registers the property to the mortgager as the security. Simple. ठीक है. Now assignment. बताओ असाइनमेंट क्या होगा? क्विकली सेंड इन योर रिप्लाईज.
See students, once you have understood all these terminologies ना with respect to advances, है ना, उसके बाद then we'll be discussing ना internal control कैसे करना है बैंक को, what all internal controls bank will implement, what all substantive procedure auditor will do. तो बेसिकली अगर आपको ये सब पता होगा, ठीक है, कि एक मॉर्टगेज डीड होती है, एक रजिस्टर्ड होती है, एक इक्विटेबल होती है, प्लेज में गुड्स को देखना है, गुड्स आते हैं, तो उसी से रिलेटेड देयर विल बी ऑल इंटरनल कंट्रोल्स एंड द सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, ठीक है. सो इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स एंड आई थिंक लाइक आई बिलीव दैट दीज आर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल प्रैक्टिकल. ये जो मैंने आपको बोर्ड वाला बताया है that a board will be put, or Prabhas was saying that he has seen that at the back of the auto rickshaw the wordings hypothecated with SBI is mentioned. तो ये practical aspects हैं. देखो assignment क्या है. So basically when a borrower is having any future right, let's say in a debtor, और लेट्स से अब हम समझेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट कैसे लोन मिलता है इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. सो दैट बोरोअर में असाइन और ट्रांसफर दिस फ्यूचर राइट टू द बैंकर कि भाई कल को जब पैसा मिलेगा ना आप ले लेना, अभी आप मेरे को मार्जिन वगैरह कंसीडर करके थोड़ा सा डिस्काउंट फीस वगैरह चार्ज करके यू गिव मी द मनी, है ना. सो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे कैसे मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज हैविंग अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसपे ही हैज पेड अ प्रीमियम ऑफ 30 lakhs. ही इज इन अर्जेंट नीड ऑफ फंड्स, तो ही में अप्रोच द बैंक कि देखो दिस इज माई LIC with respect to which I have paid a premium of 30 lakhs and after 10 years I'll be getting let's say 1 CR. ठीक है. So obviously 1 CR के around the bank will not give the loan ना, because अभी तो premium 30 lakhs का ही pay हुआ है ना. So based on 30 lakhs premium which has been paid and keeping some margin, let's say the bank decides to give a loan of 20 lakhs to the person. So he has assigned the future right to the bank and in turn obtained what? The loan. So assignment represents the transfer of an existing right or property belonging to a person. पर्सन कौन है यहाँ पे? बोरोवर. टू अनदर पर्सन कौन है यहाँ पर? बैंक. ओनली एक्शनेबल क्लेम्स लाइक योर डेट या आपका जस्ट अ मिनट, ओनली एक्शनेबल क्लेम्स सच एज बुक डेट्स. मतलब अगर आपने किसी को मॉर्टगेज कर दिया या प्लेज कर दिया या हाइपोथिकेट कर दिया, उसको तो असाइन नहीं कर सकते ना, तभी तो वो बोर्ड लगाते हैं ना SBI का, है ना, वो नहीं आएंगे. सो ओनली एक्शनेबल क्लेम्स दैट इज जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हो, सच एज बुक डेट्स एंड LICs आर एक्सेप्टेड बाय बैंक्स एज सिक्योरिटी बाय वे ऑफ असाइनमेंट. एंड असाइनमेंट गिव्स असाइनी एब्सोल्यूट राइट ओवर द मनीज डेट्स असाइन्ड टू हिम. तो कल को जब LIC वो रियलाइज होगी, जब वो मेच्योर होगी, तब बैंक विल रिसीव द पेमेंट. ठीक है, इज इट क्लियर? इक्विटेबल में मेयर ट्रांसफर ऑफ डिलीवरी ऑफ टाइटल डीड होती है कि बस आपने टाइटल डीड बैंक को दे दिया, बैंक ने आपको लोन दे दिया. लेकिन रजिस्टर्ड में अपार्ट फ्रॉम दैट एक मॉर्टगेज डीड भी आप साइन करते हो, उसको रजिस्टर करवाते हो. ठीक है स्मिता, देखो अगर कोई आपने डेटर है, ठीक है, आपने उसको हाइपोथिकेट ऑलरेडी कर रखा है, तो अब उसको असाइन थोड़ी ना कर दोगे. श्री राम, इज इट क्लियर? एक्शनेबल क्लेम्स, देखो दैट इज क्लेम टू एनी डेट अदर देन डेटर सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लेज और इमूवेबल प्रॉपर्टी. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ व्हाट इज सेट ऑफ? Try to relate this with the concept that you must have done in your taxation कि आप set off कर देते हो, है ना. So let's say Mr. Ram है and he is having a deposit account in XYZ bank and he has taken a loan from the same bank. So set off means कि कल को अगर ये लोन नहीं repay कर पाता, तो जो भी deposit account में पैसा पड़ा होगा ना, उससे set off हो जाएगा. But there is a condition that the account, both these accounts should be of the same person, provided both the accounts are held in the same name and the same right. What is meant by this? For example, Mr. Ram है, इन्होंने एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोन लिया और इंडिविजुअल कैपेसिटी में ही is having a deposit account, सेविंग्स अकाउंट है, तो इन दोनों को सेट ऑफ कर सकते हैं. If Mr. Ram is having an account as a partner of the firm, तो अब यहां पर सेटअप नहीं होएगा. कैपेसिटी
of the account holder should also be same in both the accounts. Capacity भी same होनी चाहिए. Clear? Is it clear? Simple है. And what is meant by lien? You all have done this topic in detail with me in chapter number 10. That it is the creation of a legal charge with the consent of owner, which gives lender a legal right to seize and dispose, liquidate the asset under lien. तो general law of lien हमने क्या पढ़ा था कि अगर if any payment is due from a person और वो नहीं पे कर रहा है, and if bank is having let's say gold, ठीक है, as a security from that person, so bank may after getting the consent from the owner कि भाई you are not making any payment, we will have to sell the loan. It may sell that we will have to sell the gold. The bank may liquidate the asset, that is it may sell the gold. ठीक है, is it clear? Yes, Anushka, you are correct. FDs are also covered. Aditi, your doubt is not clear. Please send me again. देखो असाइनमेंट क्या है, कल को अगर कोई फ्यूचर राइट है कि डेटर्स ने मेरे को 1 crore देना है, ठीक है, मेरा एक राइट है ना, या मेरे को LIC मैच्योर होगी, तो अब क्या होगा, आई में असाइन दैट राइट टू द बैंक कि अभी आप मेरे को डिस्काउंट कंसीडर करके अपना मार्जिन कंसीडर करके कुछ कम अमाउंट दे दो, है ना, एंड लेटर ऑन यू मे रिकवर इट फ्रॉम दैट डेटर. ठीक है, सो देखो असाइनमेंट रिप्रेजेंट्स अ ट्रांसफर ऑफ एन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर राइट और प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अ पर्सन. मिस्टर राम का है ना डेटर, इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन. इज इट क्लियर? ठीक है, सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी. का टाइप क्या होता है, प्राइमरी एंड कोलेटरल. एंड व्हाट आर द मोड ऑफ क्रिएशन दैट वी हैव डिस्कस्ड, मॉर्टगेज, प्लेज, hypothecation, assignment, set off, and lien. And students, as I always tell you, that since any topic which is new and this topic is new to you, है ना, ये अभी तक नहीं पढ़ा था ना कहीं पर भी, so it is going to be more clear to you when once you go once after the session you go through this module in entirety. एक एक लाइन जब आप read करोगे ना with concentration, I assure you that the examples that we are discussing in class, whatever discussions we are having with respect to various topics, all that will all that will make you feel easy in understanding the concepts. ठीक है, सो ये बहुत क्लियर होएगा जब आप इसको रीड करोगे. आई अंडरस्टैंड कि अभी आपके कुछ डाउट्स बार बार आ रहे हैं. व्हाई? बिकॉज दिस इज अ वेरी न्यू टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू. हाँ श्रीराम, दैट विल हैपन ना, कि उसको बोलेंगे कि आप पे कर दो, वो नहीं पे करता, देन द बैंक विल सेल ऑफ द गोल्ड इन आवर केस. ठीक है, ठीक है. नाउ ये जो है क्लासिफिकेशन of the advances as per prudential norm, I'll take up this in the later half of this session. ठीक है, so now देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, कि हमने पढ़ा what are the various types of advances, उसके लिए क्या सिक्योरिटी होती है, क्या collateral सिक्योरिटी आती है, what are the mode of creation of security. ठीक है, अभी एडवांसेस जो होते हैं, these are what the assets and these generate income for the bank, है ना, ठीक है. These generate what? Income for the bank. Now, when these assets cease or stop to generate income for the bank, they become what? Bank. They become what? NPA, that is non-performing asset. देखो ये एसेट क्या कर रहे थे, ये कुछ परफॉर्म कर रहे थे ना बैंक के लिए, तब भी तो इनको रखा हुआ था ना. मतलब क्या परफॉर्म कर रहे थे, इंटरेस्ट इनकम जनरेट कर रहे थे ना. ठीक है, बट व्हेन दे सीज मतलब क्या होता है, स्टॉप to generate income for bank, they become what? Non-performing asset. A very, very important concept when we are understanding the concept of advances, है ना. ये if any of
And any one of you have heard about what NP is, non performing asset? कि asset अगर non performing asset हो जाता है, then with respect to such accounts, income recognition, है ना, इनकम रिकॉग्निशन विल चेंज, कि कैसे इनकम रिकॉग्नाइज करनी है वो चेंज हो जाएगा. द बैंक विल हैव टू मेक अ प्रोविजन. बाय प्रोविजन, देखो अभी तक तो दे वर जनरेटिंग द इनकम ना, अब चांसेस क्या है कि रीपेमेंट भी ना हो, ये तो नॉन परफॉर्मिंग है. देखो परफॉर्मेंस में क्या क्या इंक्लूड होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड. इनकम जनरेट हो रही है, प्लस जो आपने लोन दिया हुआ है प्रिंसिपल भी तो रीपेमेंट हो रहा है ना इनका. Principal is also been repaid, है ना. So when they become non-performing, it means that that asset is not getting the repayment of principal and the payment of interest, है ना. तो अगर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल भी नहीं आ रहा तो कुछ प्रोविजन तो बना के चलना पड़ेगा ना, बिकॉज लॉसेस आ रहे हैं ना. मतलब कंपनी बैंक ने कुछ लोन दिया था जिसके ऊपर इंटरेस्ट आना था, अब इंटरेस्ट तो छोड़ो, ये रीपेमेंट भी नहीं हो रहा है, तो बैंक विल हैव टू मेक सर्टेन प्रोविजंस ना. एंड फॉर ऑल दीज थिंग्स, एसेट क्लासिफिकेशन, द प्रोविजनिंग, द इनकम recognition, RBI has issued what? Prudential norms. Prudential का क्या मतलब होता है? Judicious, है ना. कोई वाइस मैन अगर आपके कुछ रूल्स रेगुलेशंस, है ना, कुछ गाइडलाइंस लेके आए तो उसको क्या बोलते हैं? प्रूडेंशियल नॉर्म्स. तो आरबीआई ने विद रिस्पेक्ट टू इनकम रिकॉग्निशन, विद रिस्पेक्ट टू एसेट क्लासिफिकेशन and with respect to provisioning pertaining to advances, RBI has issued what? Certain prudential norms. ठीक है. So उसके लिए now we will understand, we will after the break we'll understand that अच्छा नॉन परफॉर्मिंग क्या होते हैं ये हमने समझ लिया कि जब वो जनरेट करना बंद कर देते हैं इनकम. नाउ टर्म लोन को कब हम एनपीए मानते हैं, कैश क्रेडिट को कब एनपीए मानना है, बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड को कब एनपीए मानना है, एग्रीकल्चरल एडवांसेस को कब एनपीए मानना है, स्टाफ लोन्स को कब एनपीए ट्रीट करना है, एंड वेरियस अदर एडवांसेस आल्सो. वी विल discuss all those matters after the break. And students, these discussions are totally practical and these are very very interesting. ठीक है. So be here after a break of sharp 10 minutes, है ना. 10 minutes का break लेंगे because I need to cover the advances concept in entirety till page number 12.36 today. Otherwise एक और session है उसमें complete नहीं हो पाएगा chapter. ठीक है. Meanwhile you all can send in your queries. ठीक है. So we will take a break of sharp 10 minutes here. See you after 10 minutes.
So students, I hope you all are back after the break. Students, quickly send in your replies whether you have came back or not. I'll definitely start quickly. So, who is saying pledge? See, pledge क्या है? गिरवी रखना नीलाब्जो. For example, a person is taking a gold loan. तो ये जो मुथूट gold loan वगैरह होते हैं, these are the perfect example. So what will the borrower do? If he wants to take a gold loan, he will take his gold to the bank और उसको गिरवी रख देंगे, प्लेज कर देंगे, डिलीवर कर देंगे उस गोल्ड को, किसको? बैंक को. बैंक विल कीप दैट एज अ सिक्योरिटी, है ना, प्लेज क्रिएट कर दिया ना उसके ऊपर, दैट वो गोल्ड किसके पास है? बैंक के पास है, एंड देन लोन दे देंगे. ठीक है. सो प्लेज इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द बोरोवर टू द लेंडिंग बैंक विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग अ चार्ज देयर ऑन, है ना. ठीक है. इज इट क्लियर? हुज डाउट वाज इट? आई जस्ट फॉरगॉट. Hiral, what is your query? Please send it again. अगर मैंने नहीं लिया है तो देखो. Set off. Hiral is asking set off. So Nilabjo, it was your query with respect. नहीं, भारद्वाज I think. पता नहीं किसका query था. So Nilabjo, I think pledge is clear now. And set off क्या है? देखो, if Mr. Ram in his personal capacity, he is having a savings account. एक deposit account है, let's say, और एक लोन अकाउंट है. सो बैंक आस्क मिस्टर राम की कुछ सिक्योरिटी तो दो. तो मिस्टर राम विल से, सी यू हैव अ डिपॉजिट अकाउंट ना इन माय नेम. तो लेटर ऑन इफ आई डू नॉट रीपे द लोन, यू मे यूज द बैलेंस दैट इज देयर इन द डिपॉजिट अकाउंट. सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द अमाउंट इन द डिपॉजिट अकाउंट, accordingly calculating the margin, the bank will give the loan to Mr. Ram, and here the security is what? Set off against the loan. ठीक है. Hiral, is it clear? So actionable claims के लिए भी there is a doubt. Actionable claims क्या होते हैं? Against which action can be taken in the court of law. तो देखो, अगर कोई debt है which is secured, है ना, तो उसके लिए तो यू नीड नॉट गो टू द कोर्ट ना. उसके लिए तो डेट अगर है विच इज सिक्योर्ड बाय एन इमूवेबल प्रॉपर्टी और ए मूवेबल प्रॉपर्टी, यू मे सेल दैट मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी. बट द डेट विच इज अनसिक्योर्ड is what? Actionable claim. That with respect to that debt, the person can move to the court of law if any claim on that debt is there and the person is not paying it. अगर सिक्योर्ड है तो वो तो ऑलरेडी सिक्योर्ड है ना. आप उसको जो भी आपकी मॉर्टगेज, अगर उन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी किया हुआ है या मूवेबल प्रॉपर्टी, गोल्ड वगैरह, यू कैन जस्ट सेल दैट ऑफ एंड यू कैन गेट योर अमाउंट बैक. तो एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? अनसिक्योर्ड के लिए यूज होगा वेयर बाय, है ना, वेयर बाय एक्शन कैन बी टेकन इन द कोर्ट ऑफ लॉ. So who was having this query? I think Bhardwaj, it was your query. So I hope it is clear. See, Anushka, it is specifically mentioned here that for the purpose of set off, all branches of a bank are treated as one single entity. तो अगर एक बैंक की different branches में भी account है तो भी it will be considered as different as a single entity. Obviously different बैंक है तो वो तो different ही हो गया ना. अभी तो हम एक particular बैंक की बात कर रहे हैं ना. तो different branches of a same बैंक में account है, deposit भी और loan भी, तो set off is possible. ठीक है. चारू, pledge में क्या है? आपने क्या किया? आपने possession दे दिया गोल्ड का, किसको? बैंक को. द possession is given to the lender. पर हाइपोथिकेशन में तो स्टॉक का possession एंड ओनरशिप बोरोवर के पास ही रहता है ना. प्लेज में सिर्फ ओनरशिप रहेगा, लेकिन पोजेशन गोल्ड तो उठाकर हम बैंक को दे देते हैं ना. तो हियर प्लेज के केस में पोजेशन इज ट्रांसफर टू द बैंक. हाउएवर इन केस ऑफ हाइपोथिकेशन, ओनरशिप और पोजेशन में से कुछ भी इज नॉट ट्रांसफर टू द बैंक. बस बैंक, what will bank do in case stock is hypothecated? तो वहां पर अपना एक बोर्ड लगा देंगे कि that this stock is hypothecated, है ना. सेम वे देयर वाज अ डाउट कि मैम अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है,
एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसको एज अ सिक्योरिटी असाइनमेंट भी यूज किया हुआ है बाय अ बोरोवर, ही मे यूज दिस अगेन। नहीं, अगर एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को एज अ सिक्योरिटी दिया हुआ है, द बैंक पर्सोनल विल गो टू द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफिस एंड विल गेट it written on that life insurance policy original copy पे that it is assigned, so that that borrower is not using it again and again. बैंक भी तो समझदार है, बैंक को भी तो अपना पैसा बचा के रखना है ना स्टूडेंट्स. Is it clear? So Anushka, your doubt is clear. Hiral, you also reply. And Pledge, Nilabjo, is your doubt clear? Then with respect to Hiral, whether your doubt is clear? ठीक है. Shri Ram, whether your doubt with respect to actionable claims, whether it is clear or not. ठीक है. So now I'll proceed further. I have taken up all your queries. ठीक है. So where we were discussing that now we have understood कि advances होते हैं ना, they generate income in the form of interest, है ना, और उनका repayment of principal भी आता है. Now when any asset, when any advance cease, stop to generate income for the bank, वो क्या बन जाते हैं? non performing assets, because now they are not performing ना. Performance in the way what? Repayment of principal, the payment of interest amount, अब वो नहीं आ रहा है. ठीक है. However, with respect to different type of advances, as I've told you before the break also, that with respect to different type of advances, there are different norms which have been prescribed by RBI कि अगर टर्म लोन के केस में ऐसा हो तो इसको एनपीए बनाना, अगर सीसी कैश क्रेडिट के केस में ऐसा हो तो उसको एनपीए बनाना, अगर एग्रीकल्चरल एडवांसेस के केस में ऐसा हो तो उसको एनपीए बनाना. अब कैसा कैसा हो, we will be discussing that in detail. ठीक है. Now we will start with what? The term loan. When will a term loan be considered as non-performing asset? So thumb rule is what? An asset and advance becomes NPA when it stops, ceases. The term ceases, it means stops to generate income for the bank. ठीक है. So a term loan will be considered as NPA. Now be with me. I have cleared all your doubts. No more doubts related to the earlier discussion, because अगर आप घर जाके read करो, in case like after the session read the module, in case any doubt is still there, in the next session you can ask me, है ना. पर अभी के लिए try to understand this NPA, the norms relating to NPA, which is very 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 important, है ना. term loan को अब कब NPA consider करेंगे? देखो, let's say the interest amount with respect to term loan was due on 30th June. ठीक है. और ये ड्यू डेट पर, ऑन ड्यू डेट इट हैज नॉट बीन पेड बाय द बोरोवर. ठीक है. सो ऑन द नेक्स्ट डेट इट बिकम्स व्हाट? ओवर ड्यू. ओवर ड्यू. व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट. ये ओवर ड्यू बना है, तो क्या ये एनपीए बन गया? नहीं. द प्रूडेंशियल नॉर्म सेज when any term loan is overdue for a period of 90 days, after 90 days completion it will become NPA. ठीक है. So in case of a term loan, if any interest amount और principal भी तो repayment होता है ना, principal repayment is, let's say it was, the due date was 30th June and it was not paid, the next day it becomes what? Overdue. And if it is overdue for a period of 90 days, है ना, more than 90 days, if it is overdue for a period of more than 90 days, it will be recognized as a non-performing asset. ठीक है. It will be recognized as a non-performing asset. और overdue, यहाँ पर ये overdue हो गया. overdue क्या है? Any amount ड्यू टू द बैंक, ये बोरोवर को बैंक को पे करना था ना, अंडर एनी क्रेडिट फैसिलिटी इज ओवरड्यू इफ इट इज नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट फिक्स्ड बाय द बैंक. बैंक ने 30 जून बोला था, आपने उस दिन नहीं पे किया, ये ओवरड्यू हो गया. एंड इफ
remains overdue for a period of more than 90 days, ये क्या हो जाता है NPA. It will be recognized as NPA. Students come back. अब वो doubts छोड़ दो, you are repeating your doubts again and again, है ना. Concentrate on this topic. It is very very important. तो टर्म लोन समझ आया. ड्यू डेट पे पे नहीं किया है, अब वो ओवरड्यू हो गया है. इफ इट इज ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 days, it becomes what? Your non-performing asset, and this is applicable for what? Term loan. Same way with respect to bill discounted and purchased. Bill discounted and purchased, if the bill remains overdue for a period of more than 90 days, same, तो ये क्या हो जाएगा? It will be considered as NPA. It will be considered as NPA का क्या मतलब है? ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया. इसका इनकम रिकॉग्निशन डिफरेंट हो जाएगा, है ना. इसके लिए प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा. इनकम रिकॉग्निशन कैसे होगा, प्रोविजन कैसे क्रिएट होगा, दैट आई विल डिस्कस. पर अभी के लिए ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन विल एन एडवांस बी कंसीडर्ड एज एनपीए. तो टर्म लोन एंड बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज कब एनपीए होगा? जब वो इज ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 days, है ना. जिस दिन ओवरड्यू हुआ उस दिन आप एनपीए नहीं बनाओगे. जब ओवरड्यू होने के बाद 90 days, मोर देन 90 days हो गया, इट विल बिकम व्हाट? एनपीए. क्लियर विद रिस्पेक्ट टू टर्म लोन एंड बिल डिस्काउंटेड. नाउ विद रिस्पेक्ट टू कैश क्रेडिट, अभी हमने पढ़ा ना कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, सीसी लिमिट या ओडी, ये कब नॉन परफॉर्मिंग होते हैं. सो इन दिस केस अब देखो, इन आर एग्जाम्पल सैंक्शन लिमिट कितना था? 50 lakhs था. एंड ड्रॉइंग पार कितना आ रहा था? 37.5, समवेयर अराउंड दिस. तो हम कितना ड्रॉ कर सकता है बोरोवर एज पर दिस स्टॉक स्टेटमेंट? 37.5 कर सकता है. यही पढ़ा था हमने, ठीक है. सो इट सेज दैट 37.5 लाख ड्रॉ कर सकता है, ठीक है. सो देर आर 3 situations. जैसे हम टर्म लोन को और बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड को क्या बोलते हैं? दे बिकम ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 days, देन दे विल बी कंसीडर्ड एज एनपीए. यहां पर व्हाट इज द टर्म यूज्ड? टर्म यूज्ड इज व्हाट? आउट ऑफ ऑर्डर. तो टर्म लोन के लिए हमने ओवरड्यू यूज किया. कैश क्रेडिट के लिए वी आर यूजिंग व्हाट? आउट ऑफ ऑर्डर. एंड व्हाट इज मेंट बाय आउट ऑफ ऑर्डर? सो मिस्टर राम ने ये फैसिलिटी अवेल की है फ्रॉम द बैंक. सो इफ मिस्टर राम withdraws, let's say 40 lakhs, which is more than the limit, है ना, which is more than the limit. अब 50 lakh या 37.5 में से you all know lower of the two can be withdrawn. So 37.5 से this exceeds. That means the outstanding balance remains continuously in excess of sanctioned or DP, है ना, जो भी लगेगा, whichever is lower, for a period of more than 90 days. For a period of more than 90 days, तो वो क्या हो जाएगा? It will be continuously for a period of 90 days, तो वो क्या हो जाएगा? Out of order. ठीक है. इफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस, देखो अगर आपने 40 lakhs ड्रॉ कर लिया, 40 lakhs पे करना है ना बैंक को, है ना, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. तो इफ यू हैव एक्सीडेड द आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस कंटिन्यूअसली फॉर अ पीरियड ऑफ 90 days, 90 days के लिए कंटिन्यूअसली इट इज इन एक्सेस ऑफ द ड्रॉइंग पावर और द सैंक्शन लिमिट, द अकाउंट विल बिकम व्हाट? आउट ऑफ ऑर्डर एंड इट नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट. क्लियर? ये तो है पहला क्राइटेरिया. Secondly, let's say the limit is, the amount drawn is 35 lakh, which is within the limit. तो लिमिट तो आपने एक्सीड नहीं की ड्रॉइंग पार या सैंक्शन लिमिट से, whichever was applicable. But let's say जो इंटरेस्ट आना था ना with respect to that amount withdrawn, it was interest should have been 5 lakh should have been deposited in the account by the borrower with respect to the cash credit, कि 5 लाख उसको इंटरेस्ट देना था. If no credits are there, no deposit is there with respect to interest
फॉर अ पीरियड ऑफ कंटिन्यूअसली फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज, पिछले 90 डेज में आपने कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करवाया ही नहीं है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका क्या मतलब है? दैट मिस्टर राम इज नॉट एबल टू रियलाइज इट स्टॉक एंड इट डेटर्स, तभी तो वो डिपॉजिट नहीं करवा पा रहा है ना एनी ऑफ द इंटरेस्ट। सो दो द अमाउंट दैट ही हैज ड्रॉन दैट इज एज पर द लिमिट, है ना, 37.5 लाख से एक्सीड नहीं कर रहा है, बट सिंस देयर हैज नॉट बीन एनी क्रेडिट ड्यूरिंग द लास्ट 90 डेज, है ना, कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 90 डेज, द अकाउंट विल बी कंसीडर्ड एज आउट ऑफ ऑर्डर एंड हेंस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्लियर? क्लियर? देन द लास्ट थिंग इट सेज, फर्स्ट में क्या है कि आप एक्सीड किसको कर जाते हो? जो भी आपका ड्रॉइंग पावर और सैंक्शन लिमिट विच एवर इज एप्लीकेबल, मतलब जो भी लोअर है उसमें जो भी एप्लीकेबल है। इन आर केस डीपी, इन आर एग्जांपल डीपी is what 37.5, so that is applicable, and the borrower has drawn more than that amount for a period of 90 days, तो वो एनपीए आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। सेकेंड केस में दो इट इज विद इन द लिमिट बट देयर इज नो क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट इन द अकाउंट, तो 90 डेज के लिए कोई क्रेडिट है ही नहीं, तो अगेन इट विल बिकम व्हाट द इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एनपीए। एंड इफ लेट्स से देयर आर क्रेडिट बट सिर्फ 2 लाख के हैं, दीज आर नॉट इनफ टू कवर ऑल दीज डेबिट अमाउंट्स, मतलब जो बैंक ने आपको 5 लाख के लिए डेबिट किया होगा ना, बिकॉज 5 लाख बाय वे ऑफ इंटरेस्ट इज पेबल, बट जो आपने अमाउंट डिपॉजिट किया दैट इज ओनली 2 लाख, सो इट इज नॉट इनफ टू कवर द एंटायर डेबिट दैट हैज बीन डन बाय बैंक इन द लास्ट 90 डेज, तो द अकाउंट will become what out of order and it needs to be considered as what the नॉन परफॉर्मिंग एसेट। समझ आया? तो टर्म लोन में क्या है? इफ इट इज ओवरड्यू फॉर अ पीरियड of more than 90 days, so it will be considered as non-performing asset. Same way with respect to bill discounted and purchased, but cash credit के लिए we use the term of out of order. अब out of order का क्या मतलब है? That the outstanding balance, मतलब जो आपने draw किया हुआ है, that is continuous 90 days के लिए वो in excess है of the drawing power or sanction limit whichever is applicable, or if it is within the limit but there has not been any credit for a continuous period of 90 days, or if there is a credit it is not enough to cover all the debits by the bank, that is जितना भी आपने इंटरेस्ट पे करना था उसको कवर करने के लिए sufficient नहीं है, then it will be considered as what out of order and hence non performing asset. ठीक है? Is it clear? ठीक है? So this was with respect to your cash credit. ठीक है? नाउ स्टूडेंट्स टेल मी, अब हम क्या बोल रहे हैं कि देखो टर्म लोन को, बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड को अगर ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज है तो हम इसको क्या बोल देंगे? इसको एनपीए बोल देंगे। मतलब एनपीए बोल देंगे क्या क्या मतलब है? इसका इनकम रिकॉग्निशन विल चेंज एंड कुछ प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी एज पर दी आरबीआई प्रूडेंशियल नॉर्म्स। ठीक है? सेम वे सीसी में भी हम इसको कंसीडर कर लेंगे एज आउट ऑफ ऑर्डर, अगर क्या हो, एंड हेंस एनपीए अगर क्या हो जाता है, अगर ये तीनों में से कोई भी सिचुएशन हो जाता है दैट फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 90 डेज इट इज आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस इन एक्सेस ऑफ डीपी और सैंक्शन लिमिट, और अगर आपका कोई क्रेडिट ही नहीं है फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड 90 डेज, और अगर क्रेडिट है बट इट इज नॉट सफिशिएंट टू कवर द डेबिट्स, मतलब उतना सफिशिएंट नहीं है टू कवर द एंटायर अमाउंट पेबल। ठीक है? नाउ टेल मी व्हाट हैपेंस, लेट्स से देयर इज अ टर्म लोन टेकन बाय मिस्टर राम, है ना, एंड ये जो ओवरड्यू होने वाला है 90 डेज को एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। ठीक है? बैलेंस शीट डेट। Now there is Mr. Sham who is the manager of the bank. अब देखो ये एनपीए हो जाएगा तो ऑडिटर और दी बैंक अथॉरिटीज विल होल्ड होम रिस्पॉन्सिबल, किससे इंक्वायरी होगी? मिस्टर श्याम से होगी ना, दैट अंडर योर सुपरविजन एक अकाउंट एनपीए हो गया है, नॉन परफॉर्मिंग हुआ है। सो व्हाट हैपेंस इज मिस्टर श्याम कॉल्स मिस्टर राम कि देखो आपका ना ओवरड्यू होने वाला है ना, बैलेंस शीट डेट पे। अब एनपीए कैलकुलेशन ऑडिटर्स विल डू ऑल दैट थिंग्स प्रोसीजर्स, सो यू डू वन थिंग, आप ना कुछ तो पे करवा दो, आप कुछ तो पे करवा दो, और लेट से अगर सीसी लिमिट है तो कहते हैं यहाँ पर कुछ तो आप पेमेंट करवा दो, या एटलीस्ट 2 लाख तो पे करवा दो।
ठीक है. सो लेट्स से मिस्टर राम सेज ओके ठीक है, मैं आपके अकाउंट में कुछ ट्रांसफर, मैं इस अकाउंट में कुछ ट्रांसफर कर दूंगा. फॉर दैट यू गिव मी अ फ्रेश लोन, एक और लोन दे दो. आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ दिस लोन आई विल रीपे दिस लोन एंड लेटर ऑन आई विल रीपे दिस लोन. सो ये क्या हो रहा है, अकाउंट इज गेटिंग रेगुलराइज्ड नियर द बैलेंस शीट डेट ना. बैलेंस शीट डेट के आसपास कुछ गड़बड़ कर रहा है ना मैनेजर एंड द बोरोवर, सो दैट that account is not considered as NPA. So RBI prudential norm says that auditor, you need to be very careful with respect to the accounts whereby there are the accounts which are regularized near the balance sheet date, जिसमें sudden credit आ जाते हैं near the balance sheet date. अभी तक कोई पेमेंट नहीं थी, बट बैलेंस शीट डेट के आसपास कोई ना कोई पेमेंट आ जाती है अकाउंट में, एंड दे शुड बी डीम्ड एज एनपीए अगर उसमें इनहेरेंट वीकनेस है, डिपेंडिंग अपॉन कितने टाइम से साइलेंट था, डॉर्मेंट, कितने टाइम से आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई, डिपेंडिंग अपॉन कैसे सडन क्रेडिट आ गया, डिपेंडिंग अपॉन कोई फ्रेश लोन तो नहीं दिया है, दैट अकाउंट विल बी डीम्ड एज एनपीए. है ना. इसको अभी से कंट्रोलिंग अथॉरिटीज, बैंक अथॉरिटीज को बोला कि भाई अभी से यू बी अलर्ट, ऐसा कोई अकाउंट है विच इज रेगुलराइज्ड नियर द बैलेंस शीट डेट. रेगुलराइज्ड मतलब वो रेगुलर नहीं था ना, रीपेमेंट्स नहीं आ रहे थे प्रिंसिपल के, पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट वर नॉट कमिंग, दैट इज दैट अकाउंट वाज नॉट रेगुलर. बट नाउ ऑल ऑफ ए सडन देयर हैज बीन अ क्रेडिट, मतलब वो रेगुलराइज कर दिया ना उसको. सो द ऑडिटर नीड्स टू बी वेरी मच alert with respect to such kind of assets, advances. So देखो non performing assets क्या होते हैं. An asset becomes NPA when it ceases, that is stops to generate income for bank. अब टर्म लोन कब होता है एनपीए. A non-performing asset is a loan or advance where the interest and all installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan. Same way, the bill remains overdue for a period of more than 90 days in case of a bill purchase and discounted. ठीक है. And with respect to CC, if the account remains out of order. अब out of order का क्या मतलब है? If the outstanding balance remains continuously in excess of sanction limit, or where there are no credits continuously for a period of 90 days. तो ये 90 days आप यहाँ पर भी लिख लो, continuously for 90 days. Or credits are there but not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts should be treated as out of order. तो this example is your homework, you can go through it. तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 50 lakhs is the sanction limit and drawing power 42 lakhs है. So अगर 42 lakhs है या 50 lakhs whatever is the case, तो 42 lakhs होगा, इससे excess में है for a continuous period of 90 days. या अगर there are no credits, या let's say 5 lakhs का interest था but सिर्फ 2 lakhs का credit आया, तो the account will become out of order and hence NPA. Overdue का क्या मतलब है? If it is not paid on the due date fixed by the bank. ठीक है, ये अभी हम बाद में करेंगे. अभी हमने क्या पढ़ा? अकाउंट रेगुलराइज नियर बैलेंस शीट डेट. सो द एसेट क्लासिफिकेशन ऑफ बोरोवर, वेयर अ सॉलिटरी इज अ सिंगल और अ ट्रांजैक्शन अलोन और फ्यू क्रेडिट्स, या एक आध ट्रांजैक्शन है, पेमेंट है, या फ्यू है. Solitary single are recorded before the balance sheet date should be handled with care. Where account indicates inherent weakness, कि इस अकाउंट में क्रेडिट वीकनेस है ही, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा अवेलेबल, कि लास्ट कितने टाइम से पेमेंट नहीं आई, कोई एडिशनल लोन तो नहीं दिया, द अकाउंट शुड बी डीम्ड एज एनपीए. क्लियर. नॉन परफॉर्मिंग मान लेंगे, और नॉन परफॉर्मिंग मानने का क्या मतलब है कि आप उसके लिए कुछ प्रोविजन क्रिएट करोगे, क्योंकि बैंक को लॉस हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट. ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ with respect to government guaranteed advances, देखो अगर कोई advance has been given to a party which has been guaranteed by central government, तो उसको NPA consider करने की जरूरत नहीं है. There is no need to consider that account as NPA even if it is overdue. 90 डेज से ओवरड्यू हो गया, मत करो कंसीडर, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है ना, वो पैसा कहीं नहीं जाता, बैंक विल गेट दैट अमाउंट. क्लियर. बट यहाँ पर देर विल बी अ चेंज विद रिस्पेक्ट टू इनकम रिकॉग्निशन. इसको एज अ स्टार मार्क कर लो. आई विल टेक दिस अप इन द नेक्स्ट सेशन.
तो इतना समझ आया that if any loan is there which has been backed by guarantee of central government, देखो if the central government has invoked, repudiated or cancelled the guarantee, तब तो उसको NPA करना पड़ेगा ना. If it becomes overdue, term loan है तो overdue, CC है तो out of order, है ना. But if it is backed by central government guarantee तो उसको NPA नहीं लेके जाना. Clear? So this is an exception. ठीक है. However, this rule is not applicable with respect to state government. Earlier होता था, अब नहीं है. तो अगर कोई भी loan है which is backed by state government guarantee, so if it becomes overdue for a period of more than 90 days, it will be considered as NPA for your provisioning and income recognition. और central government में मैंने क्या बोला that if any of the advances has been backed by a central government guarantee, तो इफ इट इज नॉट इन्वोक्ड रेपुडिएटेड मतलब कैंसिल नहीं की है गवर्नमेंट ने वो गारंटी, तो इट शुड बी कंसीडर्ड एज अ स्टैंडर्ड एसेट. स्टैंडर्ड एसेट कंसीडर करेंगे मतलब उसको एनपीए कंसीडर नहीं करोगे. हाउएवर उसका इनकम रिकॉग्निशन विल बी कंसीडर्ड एज एनपीए. वो कैसे होगा आई विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट सेशन. ठीक है. इज इट क्लियर? इतना समझ आया है विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट गारंटी. देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है तो ठीक है, उसको एनपीए मत कंसीडर करो इवन इफ इट इज ओवरड्यू. लेकिन अगर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है तो जैसे यू आर ट्रीटिंग एनी अदर टर्म लोन वैसे ही इट विल बी कंसीडर्ड. सो दिस 90 days इज फॉर बोथ द थिंग्स चारू. ठीक है. इट इज इन कंटिन्यूएशन बेसिकली. वो नेक्स्ट लाइन में चला गया बट इट इज इन कंटिन्यूएशन. ठीक है. सो क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है. नाउ टेल मी व्हाट इज मेंट बाय कंसोर्शियम. कंसोर्शियम क्या होता है क्विकली बताओ स्टूडेंट्स. बहुत सारा डिस्कस करना है. एंड सेंड इन योर रिप्लाईज. अभी सिर्फ बैन रेडी का रिप्लाई आया है दैट आई हैव अंडरस्टूड. बाकी सब भी सेंड इन योर रिप्लाईज एंड टेल मी व्हाट इज मेंट बाय कंसोर्शियम. देखो छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स है दैट विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल एंड देन एट द एंड वी विल बी कंबाइनिंग ऑल दीज टॉपिक्स टुगेदर to study about the internal control and audit procedures. तो जब तक आपको identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. तो हम entity और environment को समझ रहे हैं and we have started with advances. तो छोटे छोटे बहुत सारे topics हैं. We will discuss all that in detail and then we will bring in all the topic together when we will summarize कि internal control में क्या check करना है on audit procedures, substantive procedures में क्या करना है. So yes. So Nilabjo, Meghna is saying they are clear and Sarthak and Nilabjo is saying that consortium का मतलब होता है group. Consortium is what? Group. The dictionary meaning is group. So let's say Mr. Ram approaches SBI Bank for a loan of let's say 500 CR. ठीक है. SBI Bank for a loan of let's say 500 CR. अब देखो lot of risk is involved ना. SBI may be reluctant to give this loan individually. भाई इतना ज्यादा risk है. So what can SBI do? It may ask other banks. Let's say HDFC से पूछते हैं, ICICI से पूछते हैं, PNB से पूछते हैं, और किससे पूछते हैं? Axis Bank से पूछते हैं. And these 5 banks make a group or a consortium and all these banks come together to give loan to Mr. Ram. है ना. अब ये jointly monitor करेंगे ना कि कोई risk तो नहीं है. ये jointly सारा काम करेंगे ना. ठीक है. दे विल जॉइंटली डू द अप्रेजल ना. जो भी देखो ऐसे थोड़ा ना किसी को लोन दे देते हैं, कितना सिक्योरिटी चाहिए, कितना क्या चाहिए, एवरीथिंग दे विल डू जॉइंटली. फर्दर द रिस्क विल बी शेयर्ड. है ना. तो ये तो हो गई एडवांटेजेस. अब देखो एसबीआई, लेट्स से एसबीआई 200 CR का लोन दे रहा है टू मिस्टर राम. HDFC is giving 50, ICICI is 100, PNB is 50 and Axis Bank is 100. हो गया. ठीक है. Now the bank which is having the highest share, it becomes what? Lead bank. है ना. तो अब क्या होगा? Mr. Ram has approached SBI
SBI will make a consortium with all these banks. All these banks will jointly monitor and appraise the entire loan proposal. They will sanction it together and they will share the risk. कल को अगर Mr. Ram pay नहीं करता है, तो now the risk is spread between all these banks. Since SBI is the lead bank here, he initiated it and he is having the higher share. He will be called lead bank here. ठीक है? Now, students, take a situation whereby, let's say, Mr. Ram is making all the repayments to SBI. 100 crores ki, let's say, 5 repayments aani thi. And Mr. Ram is making all these repayments of 100 crores to SBI. Now, let's say 2 repayments are received by SBI and SBI is not parting with these remittances and it is not paying to HDFC, ICICI, PNB and Axis. तो लीड बैंक की बुक्स में तो पेमेंट रेगुलर है, लेकिन HDFC, ICICI, PNB, Axis बैंक की बुक्स में तो पेमेंट इज नॉट रेगुलर. नाउ क्विकली सेंड इन योर रिप्लाईज whether these 4 banks, HDFC, ICICI, PNB, Axis, they will consider it as NPA or not. अगर ये overdue for more than 90 days हो जाता है, but payment SBI के lead bank के पास तो आ गई है, lead bank is not parting with the payment, so should all these 4 banks consider it as NPA in their books or not? Quickly send me a yes or no. Quick replies I require. Quickly send in your replies. So the answer is yes, because every bank needs to send the record of recovery in their books. Hana? So that is why, dekho, what is the solution? These 4 banks will make appropriate arrangements with SBI na, so that they can receive their share and they can recognize the asset properly. Hana? So they will consider it as NPA if the amount is not received. So this is all about what consortium. And further, देखो जो आपने drawing power का concept किया ना, ठीक है, let's say CC limit है कुछ 500 crores का, तो जिस ratio में let's say SBI is giving 50% of the loan, है ना, HDFC is giving 20% of the loan, ठीक है, और कौन था, एक्सिस बैंक इज गिविंग 10% एंड रेस्ट बैंक्स आर गिविंग लेट्स से 10%, है ना, ये रेशियो है. तो जो ड्रॉइंग पार है, लेट्स से ड्रॉइंग पार जो है इसकी 1000 crores है, तो द ड्रॉइंग पार विल बी डिवाइडेड लाइक दिस ओनली. And it will be divided by whom? It will be divided by SBI. However, based on the discussions with these banks, other banks, there may be a change in the drawing power. But the thumb rule is what? In the ratio in which they are sharing the advances, the drawing power will also be shared. So let us quickly have a look at this from the module. So consortium advances means advancing loans to a borrower by 2 or more banks by forming a consortium. Consortium क्या होता है? Group. Joint appraisal, control, monitoring will facilitate exchange of valuable information. Usually a bank with higher share will lead the consortium. Example, SBI in our case. Consortium advances should be based on record of recovery of respective individual member banks, है ना, सब अपना अपना देखेंगे ना कि अपनी बुक्स में पैसा आया है या नहीं, and other aspects having bearing on the recoverability of advances, मतलब अपने बुक्स में देखेंगे every bank. Where remittances by the borrower under consortium, remittances is what? Repayment या payment of interest, are pooled with one bank, that is Mr. Ram SBI को payment दे रहा है, और where the bank receiving remittances, SBI in our case, is not parting with the share of the other members, उसको नहीं repay कर रहा बाकी सबको, the account should be treated as not serviced in the books of other members and therefore NPA. ट्रू फॉल्स एमसीक्यू कुछ भी आ सकता है. इनफैक्ट ये पूरे चैप्टर में से ना कहीं से भी कुछ भी आ सकता है. हितेश, यस यू आर करेक्ट. द बैंक्स पार्टिसिपेटिंग इन कंसोर्शियम देयरफॉर नीड टू अरेंज टू गेट देयर शेयर ऑफ रिकवरी ट्रांसफर फ्रॉम द लीड बैंक एंड to get a express consent from the lead bank for the transfer of the share to ensure proper asset classification. ठीक है. Now, drawing power कैसे है? The lead bank SBI would be responsible for computing the drawing power of borrower and allocate the same to the member
banks. In certain special circumstances, at the request of the borrower, the lead bank may allot a higher or lower share of drawing power to the member bank as against their share of advances. तो देखो यहाँ पर 1550, if this has been, suppose this is what crores, अगर इतना drawing power है and this is the ratio in which they are giving the advances, so the drawing power will also be divided like this. However, based on any communications with the borrower or the members, the lead bank may change such drawing power. Okay, is it clear? Yes, it is same. Hitesh, it is same. ठीक है. So is it clear? Consortium. ठीक है. Now ये वाला topic भी हम बाद में करेंगे 12.7. Now quickly tell me. Now quickly tell me, अगर मैंने कोई advance, like if a bank has given an advance to a borrower, ठीक है, and in that bank only, let's say the bank has given an advance of 10 lakhs to the borrower, and in that bank only the borrower is having an FD of 20 lakhs, है ना. अब यहाँ पर आपका सेट ऑफ हो सकता है ना, बिकॉज लोन कितना है 10 lakhs का और FD कितना है 20 lakhs का, तो बताओ उसको NPA कंसीडर करेंगे इफ 10 lakhs में ओवरड्यू हो जाता है. क्विकली सेंड इन योर रिप्लाईज. लॉजिकली सोचो, ओवरड्यू हम कब करते हैं? व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ लॉस टू द बैंक, कि बैंक का या तो रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल नहीं आएगा या इंटरेस्ट नहीं आएगा. तो बताओ ऐसा कुछ है इधर? नहीं. एब्सोल्युटली करेक्ट. व्हाई? बिकॉज उससे ज्यादा तो FD है बैंक में, और नेशनल NSC, व्हाट इज NSC? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है लेट्स से, या KVP किसान विकास पत्र है उसी बोरोवर का, इन दैट बैंक ओनली. तो दिस इज एज गुड एज कैश ना. आप उससे सेट ऑफ कर सकते हो ना, एंड यू कैन सेट ऑफ the interest amount also. तो इधर also there will be a change of income recognition. Mark it as a double star. I'll take it in the next session. तो यहाँ पर हमने क्या देखा? It will not be considered as what? The NPA. ठीक है. Provided adequate margin is available. अब देखो adequate margin है ना, 10 लाख का लोन है, 20 लाख की FD और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आ रहा है ना. तो adequate margin is there, so it will be not considered as your NPA. Clear? ये वाला टॉपिक भी I'll take up later on. Now advances to staff. Listen to me very carefully, है ना. अब देखो advances to staff. So basically गवर्नमेंट कंपनीज में कैसे होता है? देखो, अगर if it is advances to other than staff, मतलब जो जनरल पब्लिक को है, other than staff, तो यहां पर कैसे होगा? देखो, let's say अगर 1 लाख का लोन था एंड इसमें से अगर 10,000 का रीपेमेंट है, तो ये कैसे होगा? 8,000 विल बी टुवर्ड्स द प्रिंसिपल, लेट्स से फॉर सिंप्लिसिटी, एंड 2,000 इज टुवर्ड्स व्हाट? इंटरेस्ट. 2,000 इज व्हाट? ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करना पड़ेगा, अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू कवर इट अप. सो दिस इज व्हाट? इंटरेस्ट. ठीक है. अगेन 10,000 का पेमेंट आया, तो 8,000 इज टुवर्ड्स प्रिंसिपल, 2,000 टुवर्ड्स इंटरेस्ट, सेम वे. ठीक है. दिस वे 1 लाख लेट्स से 80,000 और 20,000 रीपे हो गया. ठीक है. सिंप्लिसिटी के लिए मैंने एग्जांपल दिया. नाउ इन केस ऑफ लोन्स टू स्टाफ ना, बैंक कैन हैव अ पॉलिसी वेयर बाय अगर 10,000 का पेमेंट आया ना, इट इज टेकन टुवर्ड्स प्रिंसिपल, ये पूरा प्रिंसिपल में एडजस्ट कर दिया. फिर उसके बाद 10,000 का आया, वो भी प्रिंसिपल में एडजस्ट कर दिया, एंड पूरा प्रिंसिपल, व्हेन द एंटायर प्रिंसिपल इज एडजस्टेड, देन इट इज पेड टुवर्ड्स इंटरेस्ट. ठीक है. सो दिस इज द केस वेयर द लोन इज गिवन टू स्टाफ. ठीक है. सो टेल मी, व्हेन इज दिस इंटरेस्ट ड्यू? Is it due from 1st April? Let's say it is 1st April or 30th April. And let's say it is 30th September. Let's say for simplicity, ठीक है, कैलकुलेशन में मत जाना. 10 पेमेंट्स होंगे ना. So let's say it is 30th October. ठीक है. Tell me, इंटरेस्ट कब से ड्यू हुआ है? So here, अब हमने यहाँ क्या डिस्कस किया पहले समझो.
अदर देन स्टाफ है तो क्या हुआ है, जो भी रीपेमेंट्स है उसमें से कुछ प्रिंसिपल के लिए गया एंड कुछ इंटरेस्ट के लिए गया. However, with respect to the loans given to the staff, the entire amount of repayment is gone towards what? The repayment of principal. Once the principal is repaid, then the interest will be considered as being paid. तो interest due कहाँ से हुआ? Tell me. तो interest कहाँ से due हुआ? Correct, यहाँ से. तो it will be considered as NPA when interest is not paid here. यहाँ पे इंटरेस्ट का रीपेमेंट नहीं है, बट उसको आप एनपीए नहीं कंसीडर कर सकते. व्हाई? बिकॉज इट वाज नॉट ड्यू देयर. ठीक है, अगर यहाँ पर प्रिंसिपल का पेमेंट नहीं होता देन इट मस्ट हैव बीन कंसीडर्ड एज एनपीए, अगर ये मोर देन 90 डेज के लिए ड्यू हो जाता. बट इंटरेस्ट की वजह से इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज एनपीए. सिंपल, समझ आया? ठीक है, let us have a quick read from the module, then it is going to be very clear to you. So interest bearing staff advances as a banker should be included as part of advances portfolio of the bank. अगर as a banker दिया है तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन अगर as an employer दिया है तो कैसे करेंगे? In case of housing loan or similar advances granted to staff members wherein interest is payable after recovery of principal, कि पहले पूरा principal आ गया उसके बाद interest due होगा. Interest need not be considered as overdue for the first quarter onwards, कि पहले ही क्वार्टर में 90 days का कंसेप्ट नहीं लगाएंगे इंटरेस्ट पे, बिकॉज वो तो ड्यू ही कब है? आफ्टर द प्रिंसिपल हैज बीन repaid. Such loan advances should be classified as NPA only when there is a default in repayment of installment of principal or payment of interest on the respective dates. अगर जब principal due था आपने तब principal pay नहीं किया, या after the principal has been paid you have not paid the interest, then only they will be considered as overdue. And the staff advances by the bank as employer. देखो, अगर आपने as a banker दिया है किसी को लोन, तो वो तो जो हमने आज schedule देखा ना, तो वहां पर it will be considered. However, where the loan has been given by the bank as an employer, it will not come under the advances head. It will come under others, under the schedule of other assets. Abhi I have closed that sheet. In the next session, I'll show you कि other schedule of other assets में advances to employees आते हैं. समझ आया? तो in case of advances to staff where the advances have been given in the capacity as an employer, तो वहां पर क्या है कि पहले प्रिंसिपल का रीपेमेंट होगा उसके बाद इंटरेस्ट का होगा. तो यहीं पर तो इंटरेस्ट को ड्यू मानोगे ना, पहले थोड़ी ना इंटरेस्ट को ड्यू मान के उसको एनपीए कर दोगे. दैट्स इट, यही है इसके अंदर. ठीक है, नाउ विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चरल एडवांसेस. एग्रीकल्चरल एडवांसेस देखो, एग्रीकल्चरल एडवांसेस का डिफरेंट क्या है, ध्यान से सुनना. सी, agricultural advances are based, the duration for which they are given, it is based on the duration of the crops. ठीक है, so it can be of two types, that is long duration crop and short duration crop. तो long duration crop क्या होता है? where the crop season, that is when you sow and the time when you sow it and you harvest it, कितने टाइम में वो फसल तैयार हो जाती है कटने के लिए. If it is longer than 1 year, उसको क्या बोलते हैं? long duration crop. For example, your sugar cane, है ना. And other than long term, वो क्या होती है? short term, that is 1 year or less. For example, your wheat, है ना. तो that is what your short duration crop. ठीक है. Now with respect to advances given to farmers, है ना, उसको एनपीए कब ट्रीट करेंगे? नाउ वी आर स्टडिंग दैट. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांसेस, एग्रीकल्चरल एडवांसेस को वी हैव बाइफिकेटेड एज लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप एंड शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप. हमने कैसे डिफाइन किया? लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप एंड शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप. ठीक है, सो आई गिव एग्जांपल कि शुगर केन हो सकता है यहाँ पे, या यहाँ पे आपका वीट हो सकता है. ठीक है, सो वेयर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स क्या होते हैं? क्रॉप्स वेयर द क्रॉप सीजन इज लॉन्गर देन 1 year. और यहाँ पे क्या है? बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द क्रॉप विच इज नॉट अ लॉन्ग ड्यूरेशन. ठीक है, और ये डिसाइड कौन करता है? वैसे आई हैव गिवन यू एग्जांपल, बट हु डिसाइड्स इट? सो अ स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी इन एवरी स्टेट
दे डिसाइड कि कौन सा लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, कौन सा शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, ठीक है। नाउ व्हेन आर दीज एडवांसेस कंसीडर्ड एज एनपीए, ठीक है। तो ये कहता है कि अ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप विल बी कंसीडर्ड एज एनपीए इफ द प्रिंसिपल or the interest is not repaid or it is overdue for, अब यहाँ 90 days नहीं है, यहाँ क्या है 2 crop season। तो अगर किसी क्रॉप का 4 months का सीजन है and if it is overdue for 8 months तो it will become what, NPA, simple। and in case of long duration crop it will be considered as NPA if इसका प्रिंसिपल, जो भी आपने लोन दिया था बैंक ने या इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आया था वो ओवरड्यू हो चुका है। ओवरड्यू का क्या मतलब है, नेक्स्ट डे से ओवरड्यू हो जाता है ना, ड्यू डेट से नेक्स्ट डे। अब टर्म लोन में या बिल डिस्काउंटेड में 90 डेज का क्राइटेरिया था, हियर इट इज व्हाट, फॉर 1 क्रॉप सीजन। सो लेट्स से विद रिस्पेक्ट टू दिस क्रॉप, लेट्स से 14 मंथ्स का सीजन है, मोर देन 1 ईयर ना। तो इफ इट इज ओवरड्यू फॉर 14 मंथ्स की एक क्रॉप सीजन आके चला गया, फिर भी आपने इंटरेस्ट भी नहीं दिया, प्रिंसिपल भी नहीं दिया, तो फिर क्या दोगे ना, तो ये एनपीए कंसीडर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल एडवांसेस में वी कंसीडर इट एज व्हाट, योर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप एंड शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। लॉन्ग ड्यूरेशन क्या होता है, वेयर द क्रॉप सीजन इज लॉन्गर देन 1 ईयर, एंड शॉर्ट ड्यूरेशन क्या होता है, वेयर इट इज विच इज नॉट लॉन्ग ड्यूरेशन, दैट इज less than equal to 1 year। and ये क्रॉप सीजन कौन डिसाइड करता है, डिटरमाइंड बाय स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी इन ईच स्टेट। अब इसको कंसीडर कैसे करते हैं एनपीए, अ लोन ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप विल बी ट्रीटेड एज एनपीए इफ द इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिमेन्स ओवरड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन। तो यहाँ 90 डेज का कंसेप्ट नहीं है, 2 क्रॉप सीजन, एंड लॉन्ग ड्यूरेशन में क्या है, 1 क्रॉप सीजन, सिंपल। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है ये वाला विच आई हैव लेफ्ट। तो देखो, लेट्स से ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, देखो हेवी रेनफॉल्स की वजह से या किसी भी रीजंस की वजह से, इफ द क्रॉप इज डिस्ट्रॉयड, है ना। नाउ इफ द क्रॉप इज डिस्ट्रॉयड द फार्मर विल नॉट बी एबल टू रीपे द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट। तो ऐसे तो बहुत सारे लोन एनपीए हो जाएंगे। सो विद रिस्पेक्ट टू द एग्रीकल्चरल एडवांसेस विच हैज बीन अफेक्टेड बाय द नेचुरल कैलामिटीज, देयर इज अ मास्टर की वजह से रीपेमेंट नहीं हो रहा है, जहां पर वहां पर क्या कर सकते हैं, वहां पर द बैंक कैन रीस्केड्यूल सच लोन्स, है ना, रीस्केड्यूल कर सकते हैं रीपेमेंट पीरियड को, और दे में सैंक्शन फ्रेश शॉर्ट टर्म लोन की, ठीक है आप एक और शॉर्ट टर्म ले लो एंड you harvest your sow and harvest your crop, and then out of the receipts of all those crop you pay us for both the loans, है ना। तो रीस्केड्यूल कर सकते हैं पेमेंट को, या फ्रेश लोन कैन बी गिवन, एंड कन्वर्जन ऑफ शॉर्ट प्रोडक्शन लोन इनटू टर्म लोन भी किया जा सकता है, कि जहां पे शॉर्ट टर्म लोन है उसको लॉन्ग टर्म लोन में कंसीडर कन्वर्ट कर दिया। एंड when they are so rescheduled, then accordingly the NPA will be considered. They will be considered as NPA on the rescheduled term. इसीलिए तो रीस्केड्यूल किया है ना, क्योंकि पता है नेचुरल कैलामिटी हो गई, रीपेमेंट हो नहीं सकता। अब एनपीए कंसीडर करने से बेटर क्या है, उनको रीस्केड्यूल कर दो, उनको एडिशनल लोन दे दो, सिंपल। सो मास्टर सर्कुलर इश्यूड बाय आरबीआई elaborately with the classification and income recognition issues due to impairment caused by the natural calamities. So my pen is not working, so you just have a read. Banks may decide on their own relief measures, conversion of short-term production loan into a term loan or reschedulement of repayment period, and the sanctioning of fresh short-term loans subject to guidelines contained in RBI latest market circular. In such cases, NPA classification would be governed by such rescheduled term. अब जो rescheduled term में अगर पेमेंट वगैरह नहीं की तो उसको NPA कंसीडर करेंगे, अभी NPA कंसीडर मत करो। क्लियर है? इज इट क्लियर? ठीक है। So I will have to just a minute stop sharing this screen. I will have to close the PDF and I'll share it again. Just a minute. ठीक है, नहीं, it will not be deemed as NPA.
है ना, बिकॉज ये तो अब आरबीआई ने बोला है ना कि आप उसको रीस्केड्यूल कर दो। सी जेन्युइन केसेस है ना, नेचुरल कैलामिटीज अगर हो गया, एक्सेसिव रेनफॉल हो गया, सो देयर विल बी व्हाट, द फार्मर्स का तो लॉस हुआ है ना, दे विल नॉट बी एबल टू रीपे द प्रिंसिपल एंड पे द इंटरेस्ट। तो उस केस में एनपीए करके क्या करोगे ना, उसको रीस्केड्यूल कर दो। ठीक है अदिति, एंड आरबीआई के मास्टर सर्कुलर में है ना, इज इट क्लियर? ठीक है, तो इट विल बी एज पर द आरबीआई लेटेस्ट मार्केट सर्कुलर, एंड द बैंक्स में डिसाइड कि कौन सा रिलीफ मेजर देना है। क्लियर? ठीक है। नाउ कॉम्प्यूटेशन और ड्रॉइंग पावर, वी हैव डिस्कस दिस इन डिटेल एंड दिस इज योर होमवर्क की मीनिंग क्या है, डिफरेंट फ्रॉम सैंक्शन लिमिट, क्या कंसीडर करना है, बैंक की क्या ड्यूटी है। देखो बैंक की क्या ड्यूटी होगी कि स्टॉक स्टेटमेंट ले, ऑडिटर को क्या देखना है, वो स्टॉक स्टेटमेंट वगैरह ठीक है नहीं, कोई डिविएशंस है, और कंसिडरेशन क्या है, विद इन बोथ द ड्रॉइंग पावर एंड सैंक्शन लिमिट होना चाहिए। ड्रॉइंग पावर क्या होती है, कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन प्राइमरी सिक्योरिटी लेस द मार्जिन ऑन अ पर्टिकुलर डेट। कॉम्प्यूटेशन कैसे करना है, ठीक है। स्टॉक ऑडिट भी होता है। देखो यहाँ पे क्या है कि जब आप स्टॉक के बेसिस पे आप सीसी दे रहे हो एंड इफ द टोटल एक्सपोजर इज मोर देन 5 crores, तो यहाँ पर जो बैंक स्टेटमेंट्स, तो द स्टॉक स्टेटमेंट्स आर रिसीव्ड, बट द बैंक्स में गेट द स्टॉक ऑडिट डन, कि ऑडिटर्स को अपॉइंट करते हैं। एंड इनफैक्ट नाउ अ डेज बहुत ज्यादा स्कोप है इसमें, बिकॉज स्टॉक ऑडिट में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर अपॉइंटेड बाय द बैंक, द सीए फर्म्स, द ऑडिटर्स, एंड दे गो एंड कंडक्ट द स्टॉक ऑडिट ऑफ द borrowers, है ना, where the funded exposure is more than 5 crores, and based on the stock audit report the DP limit is decided. ठीक है, so ये like basically DP limit is decided based on the stock statements, but stock audit करने से पता चल जाता है कि सब कुछ whatever is shown is correct or not, है ना। So this is your homework, and how to calculate, this is also your homework. अगर नहीं समझ आएगा तो I will tell you in the next session. ठीक है, सो कॉम्प्यूटेशन और ड्राइंग पर अब हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आपका नेक्स्ट सेशन में इन केस ऑफ एनी क्वेरी वी विल डिस्कस ऑडिट ऑफ एडवांसेस। देखो यहाँ पर लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू, देखो द वे ऑडिट इज कंडक्टेड विल रिमेन द सेम। तो आप क्या चेक करते हो, यू चेक द इंटरनल कंट्रोल, तो कंसीडर दिस एज फर्स्ट, एंड दिस इज व्हाट योर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। ठीक है, अब देखो जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है ना, इंटरनल कंट्रोल कौन इंप्लीमेंट करेगा, बैंक, मैनेजमेंट ही करती है ना, तो बैंक विल इंप्लीमेंट। सो व्हाट ऑल इंटरनल कंट्रोल, क्विकली पढ़ो, देखो कितना सिंपल है। द बैंक शुड मेक एडवांस ओनली आफ्टर सेटिस्फाइंग द क्रेडिट वर्दीनेस, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, अग्रीमेंट्स, हाइपोथिकेशन के लेटर्स है नहीं, सैंक्शन ठीक है नहीं, एंड यूज भी तो देखोगे ना, सफिशिएंट मार्जिन है या नहीं, ठीक है, सिक्योरिटीज अगर है, अगर शेयर्स के नेम पे शेयर्स है तो वेदर इट हैज बीन ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ बैंक, ये रजिस्टर्ड मॉर्टगेज की बात कर रहा है, ये प्लेज की बात कर रहा है। इन केस ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स लाइक गोल्ड लिया आपने, कंटेंट ऑफ पैकेजेस शुड बी टेस्ट, अंदर गोल्ड ही है ना, एंड इट शुड बी सील्ड प्रॉपर्ली। ड्रॉइंग पावर रजिस्टर शुड बी अपडेटेड एवरी मंथ, अकाउंट शुड बी विद इन द ड्रॉइंग पावर सैंक्शन लिमिट, सैंक्शन लिमिट को देखना है, अगर इरेगुलरिटी है तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को बताना है, एंड एवरी अकाउंट को एटलीस्ट वंस इन अ ईयर रिव्यू करना है, और लार्ज एडवांसेस को एवरी ईयर। तो ये सिंपल है ना, व्हाट आर द इंटरनल कंट्रोल, जो भी आपने पढ़ा वो उसके लिए क्या, वो क्या था, बैंक का इंटरनल कंट्रोल ही तो पढ़ा है। नाउ अब सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्या होंगे, वही तो होंगे। ऑडिट क्या करोगे, देखो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, अब देयर इज एन एडवांसेस दैट इज रिफ्लेक्टिंग इन द बैलेंस शीट, तो एक assertion, so with respect to that item auditor will be checking all the assertions ना, कि वो exist तो करता है ना, वो valuation properly है ना, disclosed properly है ना, ऐसे तो नहीं, completeness है ना, unrecorded तो नहीं है, simple। तो देखो included in balance sheet respect of advances which are outstanding, advances represent amount due, they are appropriately supported by loan documents, no unrecorded, valuation ठीक है नहीं, disclosed described properly किया है या नहीं, और वो कैसे करेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके। तो go through this at home। अभी हमने क्या पढ़ा, एडवांसेस क्या होते हैं, इंटरनल कंट्रोल बैंक क्या लगाएगा, एंड ऑडिट प्रोसीजर्स ऑडिटर क्या करेगा। ड्रॉइंग पावर का गिवन यू होमवर्क, दैट विद रिस्पेक्ट टू ये वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल कि हाउ टू कॉम्प्यूट इट, व्हाट आर द things that bank need to keep in mind and the auditor needs to consider, ये सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है। Now the topic which is left is income recognition, जो मैंने स्टार मार्क किए हैं। Further this is also left with respect to this, the asset classification and the provision, ठीक है। This we will do in the next session, but I'll do one thing before ending the session for today, I'll quickly
take you through whatever we have done, so students don't miss it, है ना? Sneha, wait, because this is a quick revision of 4-5 minutes. It will summarize, it will put it together whatever we have done today. ठीक है? So we started with discussing advances. Why? Because advances is a very substantial portion of a balance sheet, asset side balance sheet of a bank, है ना? And as advances पे ही एक income element भी आता है, which is what? Interest. So today we are understanding what the bank entity and its environment, and whereby we are understanding what advances. अब advances can be funded and non-funded. Funded क्या होता है? जहां actual transfer of funds है, term loan, पैसा ट्रांसफर हो गया, कैश क्रेडिट, पैसा ट्रांसफर हो गया, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज, पैसा पे कर दिया, इंटरेस्ट बेयरिंग स्टाफ लोन्स, पैसा पे कर, ठीक है? नॉन फंडेड, एज इफ नाउ देयर इज नो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ फंड बट पॉसिबिलिटीज देयर. बैंक गारंटी, अभी तो सिर्फ गारंटी दी है ना कि इफ द बायर डजंट पे आफ्टर 3 months बैंक विल पे, ठीक है? लेटर ऑफ क्रेडिट, मोस्टली यूज इन केस ऑफ व्हाट? इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस. ये मैंने आपको डिटेल में बताया, कि इसको नहीं समझ आया तो इसको आपको पॉज करके या बैक करके वीडियो को प्लीज देखो, ठीक है? सो दिस इज हाउ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 29 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. जो थर्ड शेड्यूल टू द एक्ट है, whereby form A is with respect to balance sheet, और ये कैसे आती है? ऐसे. And we have seen SBI का भी as it is ऐसे ही था. And form B is with respect to P&L. अब classification sector wise हो सकता है, जैसे priority sector which RBI, देखो RBI is the main body issuing the guidelines and every rules, regulation, norms with respect to the banking sector. So RBI बोल सकता है कि agriculture, girls education, housing को ये target है, in 5 years में you need to achieve it. This is the rate of interest that will be given. This is the service charge, है ना? This will be the sanction provisions. Security wise, primary security. तो अगर कैश क्रेडिट है, स्टॉक विल बिकम प्राइमरी सिक्योरिटी. हाउसिंग लोन है तो हाउस पेपर्स विल बिकम व्हाट? प्राइमरी सिक्योरिटी. इफ द बैंक वांट्स एन एडिशनल सिक्योरिटी, उसको क्या कहते हैं? कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है? सो प्राइमरी सिक्योरिटी इज द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर फॉर बैंक फाइनेंस और द वन अगेंस्ट विच क्रेडिट इज गिवन. इट इज प्रिंसिपल सिक्योरिटी. कोलेटरल इज द एडिशनल सिक्योरिटी. इट कैन बी इन एनी फॉर्म. एंड व्हाट कैन बी द वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी? यू मे गेट अ क्वेश्चन ऑन दिस ऑल्सो. कौन कौन से सिक्योरिटी होते हैं? सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी. मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी कैसे होता है? तो स्टॉक का जो हमने कैश क्रेडिट समझा, अगर नहीं समझ आया, अभी भी कुछ डाउट है, तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से देखो, है ना? वो वाला एग्जांपल वाला पोर्शन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. नहीं आता फिर भी वी विल टेक अप द क्वेरीज इन द नेक्स्ट सेशन. हाइपोथिकेशन क्या होता है? वेयर द ओनरशिप एंड पोजेशन इज नॉट ट्रांसफर्ड. स्टॉक तो क्लाइंट बोरोवर के पास ही है, पोजेशन भी वही है, बट हाइपोथिकेटेड फॉर एसबीआई बैंक, ऐसे करके एक बोर्ड लग जाएगा, सो दैट कल को कोई भी मूवमेंट होती है स्टॉक से, वो बैंक की उससे होती है. फर्दर मैं आई एज एन बोरोवर आई कैन नॉट सेल ऑफ दैट स्टॉक, है ना? मतलब प्रायर परमिशन फ्रॉम बैंक विल बी रिक्वायर्ड, बिकॉज बेस्ड ऑन दैट स्टॉक लोन द सीसी हैज बीन गिवन. तो दिस इज व्हाट हाइपोथिकेशन. सेम इज विद केस ऑफ कार लोन्स ऑल्सो. प्लेज में क्या होता है? यहाँ पर पोजेशन आप बैंक को दे देते हो, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड लोन में. एंड मॉर्टगेज क्या होता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी का. इक्विटेबल क्या होता है? जहां पर आप सिर्फ टाइटल डॉक्यूमेंट्स, टाइटल डीड्स दे देते हो कि ये मेरे बैंक के पेपर है, बैंक ये लो, मेरे को लोन दे दो. लेकिन रजिस्टर्ड मॉर्टगेज में क्या होता है? एक मॉर्टगेज डीड बकायदा आप साइन करते हो, प्रॉपर साइन करते हो कि कल को अगर मैं पे नहीं करता तो आप इसको सेल ऑफ कर देना या वट एवर. एंड ये एक रजिस्टर्ड डीड होती है, ठीक है? एंड प्लेज हो गया. असाइनमेंट क्या होता है? जिसको डाउट है प्लीज लिसन टू इट. अगर आपको कोई फ्यूचर राइट है, फॉर एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ LIC, है ना, या कोई डेट है विच इज एक्शनेबल क्लेम्स. एक्शनेबल क्लेम्स आई टोल्ड यू दैट वेयर विच कैन बी कॉल्ड फॉर इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, वेयर द एक्शन कैन बी टेकन. अगर तो सिक्योर्ड है फिर तो आप कोर्ट में नहीं जाओगे ना उस डेट के लिए, आप उसकी जो सिक्योरिटी है यू विल सेल दैट ऑफ, है ना. पर अनसिक्योर्ड है कोई तो उसके लिए यू विल हैव टू मूव टू द कोर्ट. तो एक्शनेबल क्लेम्स या LICs के अगेंस्ट तो उसका सिक्योरिटी दे देते हैं दैट इफ लेटर ऑन दी बोरोवर इज अनेबल टू पे, तो जब वो LIC मैच्योर होगी सो इट इज असाइंड टू द बैंक, तो बैंक का राइट है उसके जो भी रीइंबर्समेंट्स आएंगे. सेट ऑफ में क्या है? इफ अ पर्सन इज हैविंग इन हिज नेम एंड इन द सेम कैपेसिटी, इंडिविजुअल की तरह, अगर
सेट ऑफ करना है तो ऐसा नहीं कि एक अकाउंट एज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, एक अकाउंट इन द इंडिविजुअल नेम, नो, इन द इंडिविजुअल नेम अगर होल्ड किया हुआ है, डिपॉजिट अकाउंट भी है, लोन भी है, तो उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, तो इट इज कंसीडर्ड एज अ सिक्योरिटी, मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं ना हम। और ऐसे ही लियन क्या हो गया कि गोल्ड है या कुछ भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है विद द बैंक, बैंक हैज द राइट दैट विद द कंसेंट ऑफ द ओनर इट मे सेल ऑफ दैट सिक्योरिटी। ठीक है, ये अभी हमने नहीं पढ़ा है। देखो, जब तक कोई भी लोन है, इट इज जनरेटिंग द इनकम टू द बैंक, दीज आर व्हाट स्टैंडर्ड लोन। व्हेन इट स्टॉप्स सीजेस टू जनरेट इनकम, ये हो जाते हैं एनपीए। अब स्टैंडर्ड में भी कुछ कैटेगरीज होती हैं और एनपीएस में भी होती है, ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। एनपीए व्हेन एन एसेट बिकम्स एनपीए व्हेन इट सीजेस टू जनरेट इनकम, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांसेस के लिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल, टर्म लोन, it will be considered as NPA if it is overdue for a period of more than 90 days, right? Same is with respect to bill purchase and discounted. With respect to overdraft or cash credit, we use the term out of order. और out of order कब होता है? When outstanding balance is in excess for continuously period of 90 days, excess of what? Sanctioned or drawing power, and yet कंटिन्यूसली 90 डेज के लिए देर आर नो क्रेडिट्स, या क्रेडिट्स तो हैं बट इट इज नॉट सफिशिएंट टू कवर द डेबिट्स, दैट इज जो भी इंटरेस्ट पेमेंट है उसको कवर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो दैट विल बिकम व्हाट? आउट ऑफ ऑर्डर। ओवरड्यू क्या है? जिस डे पे पेमेंट था, एक दिन भी ऊपर चला गया, उस दिन पे नहीं किया, तो वो क्या हो गया? ओवरड्यू हो गया। एनपीए वहां नहीं बनता है, एनपीए उसके 90 डेज के बाद बनता है। ठीक है, ये अभी हमने नहीं किया। रेगुलराइज नियर बैलेंस शीट डेट क्या है? अगर सॉलिटरी मतलब एक सिंगल ट्रांजैक्शन या फ्यू क्रेडिट्स है नियर बैलेंस शीट डेट, पहले तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी, अब सडन क्रेडिट है, तो ऑडिटर बी अलर्ट, है ना, यू नीड टू हैंडल इट विद केयर। इट कैन बी कंसीडर्ड एज डीम्ड एनपीए डिपेंडिंग अपॉन कि कितना वीकनेस है अकाउंट में। ठीक है, गवर्नमेंट गारंटी, सीजी की गारंटी, एनपीए नहीं कंसीडर करना। हाँ, इनकम रिकग्निशन एनपीए वाला होगा, वो क्या होता है? आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है तो सेम होगा जो आपने टर्म लोन में किया, दैट ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, इट इज कंसीडर्ड एज एनपीए। कंसोर्शियम क्या है? टू और मोर बैंक्स कमिंग टुगेदर टू गिव लोन टू अ सिंगल बोरोवर। तो लेट्स से जो लीड बैंकर है एसबीआई एंड आरके, जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया था, हैविंग द हाईएस्ट शेयर, ही इज getting the remittances from Mr. Ram, the borrower, and he is not, the bank is not parting with the, it is not paying the remittances to the other banks. तो other banks उसको फिर NPA consider कर लेंगे because they need to consider the record of recovery in their books. Individual member देखेंगे उसको, ठीक है। And drawing power in the ratio of the advances जो भी है वो होगा, and drawing power may be less or more depending upon the discussions or the arrangements with the borrowers, ठीक है। अगर एफडी, टर्म डिपॉजिट्स है, एनएससी है, केवीपी, आईवीपी है, एज गुड एज कैश, तो उसमें एनपीए कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। एंड इनकम रिकॉग्निशन का भी डिफरेंट मैटर है, आई विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट सेशन। एडवांसेस टू स्टाफ पहले प्रिंसिपल पे होगा, उसके बाद इंटरेस्ट होगा, तो इंटरेस्ट को यहां से ड्यू मानोगे, यहीं से ड्यू नहीं मानोगे। तो ओवर ड्यू कब मानेंगे? जब इंटरेस्ट एक्चुअली बिकम्स ओवर ड्यू, दैट इज आफ्टर द प्रिंसिपल हैव बीन रीपेड। Agriculture advances, long duration crops, short duration crop. Long duration is where the crop season is longer than 1 year. Other than those are what? Short duration. Who decides? State level bankers committee in each state decides long duration, short duration. Short duration crop में अगर कोई लोन दिया है तो वो उसको एनपीए कब ट्रीट करते हैं? when the installment of principal or interest remains overdue for more than 2 crop season, और long duration में 1 crop season. It might be possible that natural calamities की वजह से रीपेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो मास्टर सर्कुलर इश्यूड बाय आरबीआई कहता है कि बैंक्स में डिसाइड कि उसको कन्वर्ट करना है शॉर्ट को लॉन्ग में, या रीस्केड्यूल करना है, या फ्रेश लोन देना है। बेस्ड ऑन द रीस्केड्यूल टर्म्स एनपीए वगैरह कंसीडर करेंगे, ठीक है। कॉम्पिटिशन ऑफ ड्रॉइंग पावर यू हैव सीन, वी हैव सीन कि सैंक्शन लिमिट होगा, देन प्राइमरी सिक्योरिटी कुछ होगी विच इज डेटर्स और द स्टॉक। मार्जिन बैंक रखेगा कि 1 करोड़ का सिक्योरिटी है तो 1 करोड़ का थोड़ा ना लोन दे देंगे, कुछ मार्जिन भी तो रखेंगे। तो 25% अगर है तो स्टॉक स्टेटमेंट जो मंथली आएगा, बेस्ड ऑन दैट द ड्रॉइंग पावर विल बी डिसाइडेड, विच विल बी फ्लक्चुएटिंग, अप डाउन हो सकता है बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ द स्टॉक, एंड लोअर ऑफ द टू विल बी ड्रॉन, इट शुड बी विद इन द लिमिट, ठीक है। उसके लिए बोरो को क्या करना है? ही नीड्स टू सबमिट द मंथली बैंक स्टेटमेंट टू द बैंक, और अगर मोर देन 5 करोड़ है तो बैंक स्टॉक ऑडिट भी करवा सकते हैं, ठीक है।
सो ऑडिट ऑफ एडवांसेस में जितनी भी एजर्शंस आपको पता है एसेट साइड के लिए जो भी यूज होती है वो ही सब चेक करेंगे. सो जस्ट गो थ्रू इट, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स. देखो, लोन डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्डेड अमाउंट्स, ऑपरेशन ऑफ अकाउंट्स. ऑपरेशन ऑफ अकाउंट्स का क्या मतलब है, कोई अकाउंट है उसमें देख लेंगे ना कब कब इंटरेस्ट का रीपेमेंट आ गया, प्रिंसिपल का रीपेमेंट आ गया, इंटरेस्ट पेमेंट आ गया. आरबीआई नॉर्म्स, एसेट क्लासिफिकेशन ठीक है नहीं, और कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा लेंगे. वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक इन द नेक्स्ट सेशन. आईसी क्या है, जो भी आपने पढ़ा, प्लेज के साथ गुड्स को देखो ठीक से है नहीं, सैंक्शन लेटर देखो, एंड यूज देखो, एवरीथिंग लाइक दैट इज इन डिटेल. ठीक है. सो नाउ व्हाट वी हैव लेफ्ट दीज 2 स्टार आइटम्स एंड बेसिकली इनकम रिकॉग्निशन रह गया है एंड दिस provisioning is left. ठीक है. So I'll quickly in a minute I'll just quickly have a look at your queries and then we will end the session for today. Students देखो, अगर अभी भी कोई डाउट है ना, which might be possible because this is a very new टॉपिक फॉर यू ऑल. ठीक है. अभी तक जो हमने इन 11 चैप्टर्स पढ़ा है ना, उसमें कहीं पर भी ये सब नहीं आया था. तो ऑल टुगेदर जो आज हमने पढ़ा है दैट इज टोटली डिफरेंट. तो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट यू मे हैव अ डाउट, बट आई एम श्योर दैट इफ यू गो थ्रू द मॉड्यूल एट होम आफ्टर दिस सेशन एंड इन केस ऑफ एनी डाउट, आप अगर वीडियो को रेफर करते हो, योर डाउट्स विल बी क्लियर. बट स्टिल अगर डाउट रहते हो तो नेक्स्ट सेशन तो है ही इस चैप्टर के लिए. ठीक है. यस चारू, यू आर करेक्ट, बट ये इनकम रिकॉग्निशन क्या है नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. हाँ, हीरल रजिस्टर्ड डीड में भी जाएगा वो पेपर्स. ठीक है. हाँ बिंदु, दी एडवांसेस दैट आर गिवन टू स्टाफ उसको भी एनपीए कंसीडर करोगे ना, पर वो क्या है, अगर आपका प्रिंसिपल रीपेमेंट चल रहा है, ये पे नहीं किया, तब करोगे कंसीडर. और इंटरेस्ट को यहीं से नहीं मानोगे टू बी ओवरड्यू. इट विल बी कंसीडर्ड एज ओवरड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स when it is due for payment, that is once the principal has been paid. ठीक है. So ठीक है, I think I have taken all the doubts जो भी मुझे दिख रहे हैं. And Diti is saying, ma'am, we will go through the study material and then we will ask doubt. So students, from page number 12.21 till page number 12.36, almost we have covered with an exception of a page or two. So please go through the entire module जितना भी हमने किया है, and next session में quickly we will cover the topics which are left. We have one more session, that is the next session for this topic. And please send in your replies whether you have understood or not. Your messages really motivate us to, you know, teach you with more and more and more and more energy and with more teaching, like the techniques that you say that help you in understanding. Okay? So please send in your reply, and thank you for being a patient listener and the extra 13 minutes. Thank you. Good night.